AV team, please share. Continue. कंटिन्यू करिए. Before beginning the event, let us take the blessings of Goddess Saraswati, the goddess of knowledge. For this, I request technical team to play Saraswati Vandana. Thank you very much, team. With our guest speakers like Diamonds and Gems, we had chat box to source your questions. Feel free to drop questions on the chat box or topic or share your struggles and experiences. We'll answer your questions by the end of the event. Now, I'd like to invite Dr. Kavita Sharma ma'am, Professor, Department of Chemistry, SVIS, and Head Center for Women Studies, SVVV Indore, to brief us about the event. Thank you, Sakshi. Honorable Vice Chancellor, sir, Vaishnav Vidyapeeth Krishi Vidyalaya, Dr. Vidadhar, sir, guests, Dr. Tanuja Nasari, Director, All India Institute of Ayurveda, New Delhi, Dr. Kamini Kaushal, Principal, Government Ayurveda, Yoga and Naturopathy College, Jaipur, Dr. Sushma Rawat, Chitnis, MD, Pediatrics, Indore, Vaidya Suchitra Kulkarni, Ayurveda Practitioner, MD Ayurveda, Thane, Mumbai, and Dr. Mansi Deshpande, Professor, College of Ayurveda, Bharati Vidyapeeth, deemed to be University, Pune, Dr. Akhilesh Bhargav, Government Ashtang Mahavidyalaya, Indore, Dr. Preeti Kulkarni, Professor Shubdeep Ayurvedic College, Dr. Santosh Dhar, Rector and Dean FDSR, SVV Indore, Dr. Shilpa Pandit, Coordinator of this program, HOIs, HODs, faculty members, participants, and dear students. On behalf of Center of Women Studies, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, I express my deepest regards to all of you for your gracious presence and welcome you all. Today, Center for Women Studies is going to organize second national colloquium, Tejaswini, on role of Ayurveda in treating lifestyle disorder. First Tejaswini we had organized for women sarpanches,
challenges and opportunities. I would like to thank Honorable Vice Chancellor Sir for allowing us to organize this event and for suggesting this important topic, role of Ayurveda in treating lifestyle disorder. I also believe that this will be certainly going to help out all the participants, as in simple words, Ayurveda is a form of alternative medicine, that is the traditional system of medicine of India, and seeks to treat and integrate body, mind, and spirit using a comprehensive holistic approach, especially by emphasizing diet, herbal remedies, exercise, meditation, breathing, and physical therapy. The main role of Ayurvedic treatment is based on the concepts of universal interconnectedness, the body's constitution, and life forces are the primary basis of Ayurvedic medicine. Goals of treatment aid the person by eliminating impurities, reducing symptoms, increasing resistance to disease, reducing worry, and increasing harmony in life. Ayurveda believes that the entire universe is composed of five elements: Vayu, Jal, Akash, Prithvi, and Agni. These five elements, which is known as Panch Tattva, are believed to form the basic humors of life, body in varying combinations. Ayurveda provides the tools we need to understand what is health and what can we do to support it. We learn what we can do every day and what decisions we are constantly making with impact our life. Ayurveda calls each and every one of us to take back our power and claim our ability to manifest a healthy life. I would like to share some of the health benefits of Ayurveda, that you are encouraged to love yourself, get a greater understanding of your place in life. Toxins in the body are reduced, learn to clear up energy, better health at a cellular level, stronger digestion, reduced stress, and greater sense of well-being. Without taking much time, I would like to request you all, please listen full session carefully and ask all your queries at the end. I am sure you all will be benefited by attending today's session, because lifestyle disease characterize those disorders whose occurrence is primarily based on the way of living and occupational habits of the people. They are preventable. These diseases are ailments of slow progression and long duration. Their onset is insidious, they take years to develop, and once encountered, they are not easily cured. The main factors contributing to the lifestyle diseases include bad food habits, physical inactivity, wrong body posture, and disturbed biological clock. The resultant chronic ailments are obesity, depression, Alzheimer's disease, chronic backache, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, hypertension, heart disease, nephritis, and stroke. It is most important to combat these diseases with properly balanced diet, physical activity, and by connecting to nature for health, happiness, and well-being. Thank you very much. Happy learning. Over to you, Sakshi. Sure. Thank you very much for taking these to take care of health at all times. With ma'am's words, I'm really grateful to invite Honorable Vice Chancellor Sir, Sri Vaishnav Vidya Peeth Vishwavidyalaya, Upinder Dhar Sir, to Good afternoon to all of you. At the outset, I would like to welcome our resource persons for this webinar,
Dr. Ansari, Dr. Kamini, Dr. Sushma Rawat, Dr. Suchitra Kulkarni, and all other dignitaries who have joined us this afternoon. I am very happy that our Center of Women's Studies has organized this second national webinar to discuss about various issues which affect all of us. What is special about this webinar is that all the experts are women. So that's why Women's Studies, Center of Women's Studies has attempted to maintain its own identity. Well, as mentioned by Dr. Kavita Sharma, that today all of us are aware about lifestyle disorders. And these disorders are treated differently by various systems of medicine. Broadly, we know about allopathy, we know about homeopathy, we know about Unani, and above all, Ayurveda. Ayurveda has the origin in our Vedas. If we go back to Vedas, if we study the Vedas, we will see the origin of Ayurveda there. So it is so ancient, so old, and does not treat a particular disorder only, but Ayurveda believes in holistic approach, treating the whole body, psychophysiological system of a patient. Ayurveda has been there, and Government of India has made many efforts to promote this system of medicine. Though we know that allopathy is the most popular system across the world, and there are many diseases which are successfully treated by allopathic doctors. But then there are limitations. At the same time, there are limitations. These days, it is very obvious and available in literature. Through research also, it has been found that allopathic medicines have a number of side effects. So while treating one disorder, many other disorders come into place. Whereas if we talk about Ayurveda, such side effects have not been reported. If we treat a disorder properly and if it is attended by the qualified Ayurvedic doctor, the results are good. But still, as we know that there are struggles. Many people talk on different big platforms about Ayurveda, but when it comes to their personal problem, they will go to an allopathic doctor. So there are challenges. How to convince people about the efficacy of Ayurveda. Ayurveda is no less than allopathy. How to convince? It's a big challenge. And Ayurvedic doctors have been facing this challenge. How they are tackling this kind of problem, how they are handling such, say, now let's see a recent argument. When COVID came, all systems of medicine were actively handling COVID patients. It was a pandemic. It was not an epidemic, it was a pandemic. So across the world, doctors were fighting against this disorder. So here again, there is an argument that, well, ultimately vaccine came. It is a product of the allopathic medicine, not the Ayurvedic medicine. So how to convince people that it is not true? Ayurvedic system is equally important and equally going to help us because it takes care of the whole body.
It takes care of the whole, as I said, the psychophysiological system of a patient. So we would like to today in this webinar learn from our learned experts who are specifically experts in Ayurveda, that what kind of challenges they face, how they handle those challenges, and what we must know as here in this webinar, all educated population is there who can understand the language of the experts. But what needs to be done to promote Ayurveda in this society? Many people say that Ayurveda is successful in rural areas only, because allopathic doctors don't want to go there, but Ayurvedic doctors have an opportunity, and it is well accepted in rural India. Is it so, or these are just myths? So we would like to understand from the experts today and be more knowledgeable, and also understand our role as a part of the society, that what we can do as an educational institution to promote this traditional system of medicine and see to it that people start believing that Ayurveda is no less than allopathy and other systems of medicine. So with these words, I welcome the resource persons once again to this webinar, and I'm sure that by the end of this webinar, we'll be better off in our understanding about Ayurveda. Thank you very much. Thank you very much, sir. Following your words, now I would like to invite our first guest speaker, Dr. Sushma Rawat Chitnis, MD Pediatrics, Childcare Hospital, Indore. Good afternoon, everyone. Can I share my slides? Yes, please. So I am the only one who is from allopathy. And for 20 years of my practice in allopathy, I realized that allopathy is not a complete science. So I broke the walls of all different pathies and combined them all together, making a new path known as holistic medicine or Samagra Chikitsa. Allopathic medicine is best in emergency, everyone knows. But when it comes to long-term treatment, I know for sure that in many cases, it is failing to find out the root cause. There are multiple side effects. All the organs gradually become abnormal. And then I realized that the real treatment is bringing the body back to normal point. So I searched other pathies, and I found that the diet in Ayurveda is the best. In fact, I request all dietitians to follow only Ayurvedic diet, which is the naturopathy lifestyle is just excellent. Psychology and homeopathy tells us that emotional balance is extremely important. So I want to tell you how a disease starts. It's for the first step to screw up our health is emotional imbalance. And if we learn to keep emotional balance to the perfect, I think our diseases will decrease. And then I could not leave ancient Indian knowledge also. And I combined all of them together to get excellent results, which amuses me every day in my practice. So I come to the first example, migraine. I found a lady who was 50 years and taking allopathy for migraine. Finally, after 10 years, she landed up in kidney failure. And that was my first step to go to other pathies and find out the answer, because I could not afford a lady with simple headache getting kidney failure. Then I had a
30-year-old software engineer who, because of allopathic treatment from the best neurology center, was taking allopathic treatment and found that there was weight gain, there was lethargy, he was feeling sleepy all through the day, and he really wanted to leave the job because he cannot continue because of his health issues. Then I requested him to take my holistic therapy in migraine. So what did I do? I gave him vitamin D in low doses from allopathy. I gave him diet, which is Pitta diet in Ayurveda. From naturopathy, I told him to keep his intestines absolutely clean. In psychology, I told him to resolve all his issues gradually. And ancient science tells us when there is migraine, get frequent rests, and whenever you have headache, sleep it out. So the results were amazing. In 2 months, this boy was free of headache and free of drugs. His stamina rose to 100%. And what his wife told me, that madam, everything was good, but the excellent thing was his anger has come down to 0. And he has again become a slim and smart person. And his career was progressing very well now. Now coming to asthma. I see when we treat asthma in allopathy, for years together, almost lifelong, people are taking inhalers. So in holistic, what happens? I give vitamin D injections in maximum dose. From Ayurveda, I give diet, which is of papaya and vegetable soup for a long time, and kadha, which is very effective. From naturopathy, warm water enema and sun bath. Psychology, learn to be unaffected by surroundings. And in ancient science, mustard oil on chest and frequent hot fermentation. And the results, they were so amazing. There was a child who was 3 years old and he was having breathlessness for 365 days in a year. He got cured in 7 days. His father was so surprised, ma'am, what have you done? Because, combining all pathies, I take best from all pathies, combine them together. There are very few drugs required, only vitamin D, that is all, no other drug. And it is all lifestyle apart from vitamin D. And the father was extremely happy. And there was 7-year-old child whose parents were absolutely fed up treating him because he had very frequent breathlessness attacks and pain in abdomen. He was cured within 15 days. And that was amazing for me, equally to the family. And now I have one more story, 40 years female who had asthma for 20 years. Now she's almost 80% okay. And there are many more studies of asthma. And friends, this really gives me tremendous pleasure. Now, there are many children who fall frequently ill. They get admissions in hospitals. Every month they have to go to doctors. So what I did from holistic is gave them vitamin D according to their nadi dosh, and the vitamin D supplementation is lifelong. From Ayurveda, I keep them on fruits and vegetables for 3 days. Naturopathy, clean intestines, and psychology, I tell parents not to scold the children, give them love and care they want. And from ancient knowledge, I ask them to increase their playtime, decrease their studies, especially in initial 10 years of life, and give them homemade food. What does this holistic medicine do to our immune system? The immune system becomes 100% strong and doesn't allow any virus or bacteria to attack our body. And to my surprise, I could give children a childhood without diseases and without drugs. One prescription of holistic medicine and children are free of disease and drugs for years together. So one of my patients who was like a grandfather, he said, "Madam, आप क्या कर रहे हो? आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो?" I said, नहीं, ये जो खुशी है माता पिता के चेहरे पे देखने का आनंद बहुत ही अच्छा है. So coming to holistic medicine and muscle strength.
Friends, we know that farmers, lifeguards at seashore, fishermen, and tribals, they all lead a natural life. And this is all about holistic medicine. And there's muscles we know very well. So I want to remind you of hernia. As soon as hernia is there, we think that we should go for operation. Hernia is just a second name for weak muscles. And if we apply holistic medicine there, 50% of hernia gets all right. Squint is just a weakness of eye muscles. 50% of squint gets all right with holistic medicine. Friends, heart is also a muscle. And if I see a strong biceps in a person, I can surely tell that his heart is also very good. Intestines, constipation, in intestines also there are muscles which become very strong with holistic medicine, and constipation is treated so nicely without medicine. Urinary bladder is also a muscle. And in ear, there is a small muscle called stapedius. It also gets very strong and the hearing improves. Coming to endocrine glands, friends, we all know that in India becomes the hub of diabetes mellitus. There are maximum number of patients in India as compared to other countries. And the answer is very simple. Apply holistic medicine, the pancreas gets activated within 3 months, and the disease diabetes goes away, and the medicines also goes away with it. Thyroid just needs 6 months, and all other endocrine glands also get activated. Friends, coming to infertility, and it was so amazing to me that in allopathy I had seen very expensive treatment, multiple side effects, a long time was taken, and to the lady, hormones were added from outside. In holistic, just one prescription and 1 month. Almost 50% of my patients conceived so quickly, provided the internal structure is absolutely all right. That is, the tubes are open, ovaries and uterus are normal. Because holistic medicine brings the body to normal, and the body itself starts producing hormones which are required for pregnancy. Skin diseases. In allopathy, we know that steroids are the mainstay in skin diseases. But in holistic, I give them low dose vitamin D orally. Ayurveda, I keep for a long time, I keep them on fruits and vegetables. In naturopathy, warm water enema or plain water enema. And then there is no sun bath advice in skin diseases. In psychology, I tell them to soothe themselves. Music, walk, friends, time. In ancient times, Krishna's son, Sam, had skin disease. And he got all right only with pranayama, telling us that lifestyle modifications are so important. So I was so surprised to see very good results in skin. Initially, there was increment, that is treatment aggravation, because when I empty the toxin tank, the stomach, intestines, 10% of toxin spills into the blood and increases the disease. But over the time, there is complete cure. There is tremendous improvement in behavior, and the patients are free of steroids, and there is severe side effects. I was so surprised that psychiatric diseases are treated so well with holistic medicine. Mental retardation, I was amazed to see them. ADHD, children, extremely angry, destructive behavior, autism, depression, excessive anger, schizophrenia. Just you have to find out, according to Ayurveda, which body type is it, Vata, Pitta, Kapha, and then apply all the pathies. Epilepsy, friends, vitamin D and sun bath are natural anticonvulsants. Ayurveda says increase fat in diet. Allopathy says increase fat in diet. But both of them do not know that they are talking of the same things. Naturopathy, enema, I call it Brahmastra. To one patient, I gave enema of patient of epilepsy, and he passed black and foul-smelling stools for 20 days, and he was completely free of epilepsy. The best effect of holistic medicine is on brain, because it
helps the brain to recover. See the figure below, which is damaged, and the above one myelin sheath is complete. So this holistic method helps our brain to recover, increase our concentration, our analytical power, our memory. So there's a book published on epilepsy available on Amazon and in my hospital. Another book on sun bath, a very important lifestyle modification, which we Indians should never forget. There are many diseases which can be cured very, very nicely with holistic medicine. The whole list is there. It's available on YouTube. And finally, telling you the benefits of holistic medicine, friends, I have tried to dissolve the walls present in different pathies. So now the allopathic doctors and Ayurvedic doctors are not enemies to me. All are my friends, including homeopaths, including naturopaths. Everybody is friend. I can take help from anyone. In holistic medicine, there are very little medicines required except for vitamin D. There are absolutely no side effects. This holistic medicine brings the body back to normal point. And just imagine our nation with very little diseases, very little drugs consumed. We will see a very good financial benefit for our country. And there will be less crimes. How? Because holistic medicine improves intelligence quotient, emotional quotient, social quotient, spiritual quotient, and adversity quotient. You will find my YouTube videos on this address, website address is here. And thank you, friends. Thank you very much, ma'am. You were absolutely right. A team works out always the best. And of course, the best results, like 5 fingers makes a hand. So now I'd like to welcome Vaidya Suchitra Kulkarni, Ayurvedic practitioner Thane, to share with us her words of wisdom. नमस्कार. गणपति बप्पा, भगवान धन्वंतरी, रेणुका माता. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, इनको प्रणाम करके मैं मेरा विषय स्टार्ट करती हूँ. आहार के बारे में मुझे बोलना है. आयुर्वेद के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि आयुर्वेद ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है. सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगी कि इट इज नॉट अल्टरनेटिव मेडिसिन, इट शुड बी मेन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारे लिए, कम से कम भारतीय लोगों के लिए. क्यों? क्योंकि मेरा एक अनुभव है यहाँ का. थाना में सिंघानिया हॉस्पिटल करके एक बड़ा हॉस्पिटल था, अब नहीं है लेकिन पहले था. और जब उसका उद्घाटन करना था तो जर्मन के कुछ 6 एक्सपर्ट डॉक्टर्स आए थे, उनको बुलाया था उसके उद्घाटन के लिए. तो उन्होंने बोला कि आप जो ये अस्पताल बना रहे हो, हम जो सिस्टम वहाँ यूज करते हैं मेडिसिन की सिस्टम, मतलब एलोपैथी की सिस्टम, उसको हमने देखा है, हम यूज करते हैं कितने सालों से, और उसके उपयोग में हम आपसे कहीं आगे हैं, 20 साल आगे है सब जो आपसे. तो आप उसके जो साइड इफेक्ट्स है, उसके जो कमियां हैं वो हम देख चुके हैं. तो आप थाना में हैं और भारत में हैं और इतना बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि आपकी जो खुद की आयुर्वेद सिस्टम है वो यहाँ 80% चले, और सिर्फ इमरजेंसी में और जितनी जरूरत है उतनी ही आप दूसरी सिस्टम को सहायता के लिए ले. तो ये सत्य है, और ये हमें बाहर से लोग बताते हैं कि हमारे लिए, कम से कम भारतीय लोगों के लिए, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, मेन स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, न कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन. अभी आहार के बारे में मुझे बोलना है, तो आहार ये विषय इतना बड़ा है, मेरी खुद की 2 किताबें हैं आहार पे, और ये 7-8 दिन तक भी चल सकता है, इतना बड़ा विषय है, क्योंकि आहार से ही हमारा शरीर बनता है.
जो पांचभौतिक शरीर है हमारा, वो पांचभौतिक आहार हम लेते हैं, उसी से बनता है। आहार के बारे में शास्त्र में क्या बताया जाता है कि आहार एक परम औषध है। सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? तो आहार यही है। हमारे पास आयुर्वेद के वैद्यों के पास जब कोई भी रुग्ण जाता है तो उसके लिए हम पथ्य और अपथ्य बताते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। वो पथ्य अपथ्य शब्द में भी लोग गलत करते हैं। उसमें ये होता है कि जो हितकर है, जो पथ पर मतलब स्वास्थ्य के पथ पर लेके जाने वाला है, उसे एक्चुअली पथ्य कहते हैं। और जो हितकर नहीं है, अहितकर है, उसे अपथ्य कहते हैं। लेकिन लोगों में प्रचलित है कि जो खाना नहीं है, मतलब प्रमेह का रुग्ण है, उसको मीठा नहीं खाना है, तो वो बोलता है मुझे मीठे का पथ्य है। तो मीठे का पथ्य नहीं है, मीठा अपथ्य है उसके लिए एक्चुअली। और पथ्य क्या है? मीठा मीठा छोड़ के बाकी पथ्य है, उसको व्यायाम पथ्य है। तो पथ्य माने हितकर जो है उसको पथ्य कहते हैं। तो ये पथ्य बताते हैं जो आयुर्वेद के वैद्य, वो किस लिए बताते हैं? वो इसीलिए बताते हैं कि वही परम औषध है। अगर कोई रुग्ण पथ्य का पालन करे तो उसे औषधि की जरूरत नहीं रहती, और अगर कोई रुग्ण पथ्य का पालन नहीं करे तो उसे औषधि से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा श्लोक है, पथ्ये सति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किम, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किम। लेकिन लोगों में इसके प्रति इतनी कुछ अलग अलग कल्पनाएं होती है। मेरे यहाँ पेशेंट, मैं तो प्रैक्टिशनर ही हूँ इसलिए पेशेंट से देखती हूँ। तो अगर पेशेंट को कोई पथ्य बताया है और पेशेंट को नहीं करना है, तो मैंने देखा है कि वो पेशेंट फॉलोअप के लिए आते ही नहीं, पथ्य करना है तो। और ये भी होता है कि रास्ते में कहीं मिल भी जाए, दूर से दिखाई भी दे, तो रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर पूछेंगे पथ्य करते हो या नहीं करते हो। इतना पथ्य के प्रति लोगों को डर होता है, लेकिन अपने हित के लिए होता है तो उसको करना चाहिए एक्चुअली। अगर एलोपैथी में भी आपको कुछ बताया जाता है, मेडिसिन लेने के लिए बताया जाता है, इंजेक्शन लेने के लिए बताया जाता है, ऑपरेशन करने के लिए बताया जाता है, तो बिना सोच के लोग कर लेते हैं। लेकिन पथ्य के बारे में पता नहीं क्यों इतना सोचते हैं, क्योंकि वो जो जिह्वा लौल्य है ना, वो अपने ऊपर राज करता रहता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो श्रेष्ठ आहार कौन सा है? जो हमारी स्वस्थ अवस्था को बनाए रखे, कोई भी नया हमें व्याधि हमारे शरीर में निर्माण नहीं करे, वही श्रेष्ठ आहार हमारे लिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसमें आहार कैसा होना चाहिए? अभी 15 मिनट में बताना है तो बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी मैं। षड्रस आहार होना चाहिए। जो 6 रस बताए हैं आहार के बताए हैं, मधुर, खारा, खट्टा, कड़वा, तीखा, कसेला, ये सब उसमें आने चाहिए। किसी 2 या 3 रसों का समावेश अगर आहार में हो तो वो फायदेमंद नहीं है हमारे लिए, पूरा आना चाहिए। तो हमारा भारतीय आहार जो है, भारतीय थाली अगर आप देख ले कोई भी, तो उसमें मीठा भी होता है, खारा भी होता है, खट्टा भी होता है, सब कुछ होता है। जो मेन हम आहार लेते हैं, रोटी या चावल, वो मीठा होता है। सब्जी वगैरह लेते हैं, उसमें सब मसाले डलते हैं, वो सब कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। हल्दी होती है, वो कसेली होती है। मोहरी होती है, उसमें भी थोड़ा कसेला रस रहता है। और खारा खट्टा भी हम उसके साथ ले लेते हैं। तो इस तरह षड्रस आहार हमें लेना चाहिए। तो अगर आजकल माताएं जो होती है वो बच्चों के लिए खाना देती है, बहुत सारी रहती है, हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि हाँ बच्चे खाते नहीं है ना, इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, उसको एक बिस्किट का पूड़ा दे देती हूँ या एक बड़ी कैडबरी दे देती हूँ। तो उतना अगर वो खा जाए तो मेरा समाधान हो जाता है कि उसके पेट में कुछ ना कुछ गया है। तो ये आहार सही नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, ये एक रस आहार होगा। एक रस आहार जो है वो सिर्फ हमारे शरीर में पंचभूतों का, पंच महाभूतों का सम्मेलन नहीं देगा हमें। वो क्या देगा? सिर्फ पृथ्वी और आप, यही देगा। तो इसलिए पूरे पंच महाभूत अगर हमारे शरीर के पोषण के लिए हमें चाहिए तो षड्रसात्मक आहार हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। चतुर्विध आहार। चतुर्विध माने भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। इसमें किस प्रकार हम खाते हैं इसके ऊपर ये प्रकार बने। भक्ष्य यानी हम जो दांत से तोड़कर खाते हैं ना, रोटी वगैरह जो खाते हैं उसको भक्ष्य बोलते हैं। मांसाहार में भी भक्ष्य आहार रहता है। भोज्य यानी हम निवाला जिसका लेते हैं, मतलब हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो वो भोज्य हो गया। लेह्य, लेह्य यानी चाट कर खाते हैं, आचार हम चाट कर खाते हैं। और चोष्य, चूस कर हम जो खाते हैं, इस प्रकार का आहार हमारे
तो इसमें लाला स्राव भी अच्छा होगा और मुंह से ही हमारी पचन की क्रिया अच्छी तरह से शुरू हो जाएगी और हमारा खाने के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, आस्था है, वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए इस प्रकार का आहार करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आहार विधि किस तरह हमें खाना चाहिए, शास्त्र में दिया है। उष्ण खाना चाहिए। बहुत सारे उनको ठंडा खाना पसंद है और कुछ वो बनाते हैं ना, सैलेड वगैरह बनाते हैं, वो तो जानबूझ कर फ्रीज में रखकर ठंडा खाया जाता है। वो ठंडा अच्छा लगता है ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो खाना है वो हम जब खाते हैं तो शरीर में पचता है और पचने के लिए अग्नि की जरूरत रहती है और वो जो अग्नि होता है वो उष्ण होता है। अगर हम कोई भी ठंडा खाना खाते हैं तो अग्नि के लिए सहायकर नहीं होता, इसलिए हमें ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमेशा उष्ण जितना हम खा सकते हैं उष्ण उतना सुखोष्ण खाना खाना चाहिए। स्निग्ध खाना, स्निग्ध इसलिए खाना चाहिए कि वो अग्नि को बढ़ाता है। हम देखते हैं बाहर भी कोई भी अग्नि हमें प्रज्वलित करना है, दीप प्रज्वलन करना है, किसकी जरूरत रहती है? स्नेह की जरूरत रहती है। वैसे ही हमारे पेट में जो अग्नि है उसको अगर हमें प्रज्वलित करना है तो स्नेह की जरूरत रहती है। इसलिए स्निग्ध आहार घी के साथ खाना है। लेकिन घी तेल का इतना बड़ा बवाल मचा के रखा है कि घी नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एक्चुअली कौन से घी से, कौन से तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसके ऊपर थोड़ा लोगों को प्रबोधन करना जरूरी है। देसी गाय का जो घी रहता है उससे कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ता और उसके फायदे ही सबसे ज्यादा रहते हैं। इसीलिए वो स्निग्ध घी के साथ हमें खाना खाना चाहिए। मात्रावत खाना बोला है। मात्रावत मतलब क्या कि मात्रा जितनी हमारी, मात्रा कौन डिसाइड करता है? हमारा अग्नि डिसाइड करता है। मतलब हमें भूख जितनी है उतना ही खाना हमें खाना चाहिए, भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। किसी से भी कंपेयर करके, ज्यादातर माएँ होती है वो अपने बच्चों का खाना अदर बच्चों से कंपेयर करती रहती कि वो 2 रोटी खाता है, मेरा बच्चा 1 ही रोटी खाता है, ऐसे नहीं होता। अपनी भूख के अनुसार खाना खाना चाहिए और हमें भी किस तरह ध्यान रखना चाहिए कि पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए। हमारा जो पेट है उसके हम 3 भाग है ऐसी कल्पना करें, उसमें से एक भाग खाने से भर दे, दूसरा जो भाग है वो द्रव पदार्थ खाने के साथ जो होते हैं, मतलब दाल या छाछ वगैरह जो होता है उससे, और तीसरा जो भाग है उसको खाली रखना चाहिए पचन के लिए। जैसे मिक्सर में रहता है ना, थोड़ा चटनी का हम सामान डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं और ऊपर का थोड़ा सा भाग वो ग्राइंड होने के लिए खाली रखते हैं, उसी तरह। तो इस तरह हमें पचन के लिए सिर्फ 1/3 ही खाना खाना, उतना ही। मतलब हम जब खाना खाते हैं तो हमें अगर लगता है कि हम और ज्यादा आधी रोटी खा सकते हैं तभी हमें उठना चाहिए और खाना बंद करना चाहिए। गुजराती में एक कहावत है, मानसनी परीक्षा खाटले नी पाटले। आदमी की परीक्षा 2 समय पे होती है, खाटले नी पाटले। खाटले मतलब जब वो बीमार होता है तब, पाटले मतलब जब वो खाना खाता है तब। तो अगर खाटले परीक्षा है, बीमारी की परीक्षा है, वो हमें अगर नहीं देनी है, उसमें जाना ही नहीं है, तो पाटले परीक्षा जो है, हम जब खाना खाते हैं वो परीक्षा हमें सही तरीके से उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसलिए मात्रावत खाना जरूरी है। काले, काले का मतलब क्या है? काले आजकल तो बहुत सारे उसमें प्रवाद है। कोई कहता है 2 ही बार खाओ, कोई कहता है 3 बार, कोई कहता है 4 बार, कोई कहता है हर 2 घंटे बाद खाओ, कोई कहता है 1 ही बार खाओ। तो इसमें बहुत सारे मतांतर है। तो इनको छोड़ के हम ये कह सकते हैं कि काले मतलब जब हमें भूख है तब खाना खाना चाहिए। क्योंकि भूख है इसी का मतलब ये है कि आपके जो डाइजेस्टिव जुसेस है वो आना, पेट में आना शुरू हो गए हैं और तब जब हम खाना खाएंगे तभी वो अच्छी तरह से उसका पचन होगा, अन्यथा उसका पचन नहीं होगा। इसलिए काल मतलब भूख। योग्य कौन सा होता है? भूख लगना, यही खाने का योग्य काल होता है। तो अगर किसी को दिन में 3 बार भूख लगती है, किसी को 4 बार भूख लगती है तो वो 4 बार खा सकता है, किसी को 1 ही बार भूख लगती है, ऐसे रहता है प्रकृति के अनुसार। तो किसी की 1 ही बार भूख की ये है तो वो 1 ही बार खा सकता है दिन में। अविरुद्ध, अब विरुद्ध आहार ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसमें आप थोड़ा नेट सर्च कर लेंगे तो आपको भी उसमें मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा बहुत। लेकिन विरुद्ध मतलब ये है कि दूध और नमक, दूध और खट्टे पदार्थ ये मिला के जब खाते हैं तो उसको विरुद्ध बोलते हैं। इस तरह का विरुद्ध आहार हमें नहीं करना है। अविरुद्ध आहार ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। मन लगाकर खाना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आजकल लोग खाना खाते समय एक तो टीवी देखते रहते हैं या वो मोबाइल रहता है, तो मन कहाँ रहता है? खाने में तो नहीं रहता, कितना खाया है ये पता भी नहीं चलता। और
जब भी हम खाना खाते हैं तो अब अगर हम सीरियल देखते हैं या और कुछ देखते हैं तो उसमें जो रस बनते हैं ना, भावनाओं के रस बनते हैं, जो अगर क्रोध है वहां वहां कुछ विभत्स दिखाई दिया जा रहा है, वहां कुछ और है, तो उसका असर हमारे मन पे होता है। उसका सिर्फ मन पे नहीं, उसका पाचक स्त्रावों पे असर होता है और पचन ठीक से नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर समय पर अत्यंत शुद्ध, अत्यंत उत्तम और पथ्यकर आहार भी करें, लेकिन उस समय आपके मन की अवस्था अगर क्रोध से या निराशा से या और किसी दूसरे विचारों से भरी हुई हो तो उस खाने का सम्यक पचन नहीं होता। तो इसलिए मन लगाकर खाना चाहिए। ज्यादातर बच्चों को आजकल ये आदत है, युवाओं को भी है, और छोटे बच्चों को तो खाना वो खाते नहीं, इसलिए उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है कि जब इसके हाथ में मोबाइल होता है तो खा लेता है, तो माँ की छुट्टी हो जाती है। इसलिए ऐसी बहुत सारी गलत बातें आजकल हो रही है, इसलिए ये बता रहे हैं। मौन खाना चाहिए। खाना खाते समय हंसना बोलना ये भी मना है शास्त्र में। वो इसलिए कि खाना कहीं और चला जाता है, श्वास नलिका में भी जा सकता है और उसके कारण खांसी भी आ सकती है, ये भी है। और जब हम मौन रह के खाना खाते हैं तो हमें हमारा ध्यान पूरा खाने में रहता है और हम कितना खा चुके हैं, हमारा पेट इतना भरा है, हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं या भूख के लिए खा रहे हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान सही रहता है। इसलिए मौन रहकर खाना चाहिए। और आत्मानम अभिसमीक्षा शास्त्र में बताया, मतलब क्या कि खुद को देखकर, खुद को क्या हितकर है क्या अहितकर है ये सोचकर। आजकल लोग एक साथ खाना खाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, तो अगर अब किसी को प्रमेह है, डायबिटीज है, उसको मीठा खाना मना है, फिर भी लोग उसको आग्रह करते रहते कि नहीं वे खाओ, उसमें क्या है, इतना सा खा लोगे तो कुछ नहीं होगा, एक गोली ज्यादा ले लेना। तो ये एक गोली ज्यादा लेने वाली जो बात है ना, वो डेंजरस है। तो आप 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 जो जिसको खिला रहे हो उसको आप खुद को उसका क्या समझते हैं, मित्र समझते हैं या शत्रु समझते हैं? अगर आप मित्र समझते हैं तो उसको ये बात कभी नहीं कहेंगे कि ये खाओ और एक गोली ज्यादा ले लो। अगर आप उसके दोस्त हो तो ये बात कहेंगे ही नहीं, अगर आप उसके शत्रु हो तो ही ये बात कहेंगे। लेकिन फिर भी अगर लोगों का जोर है, मित्र जो है वो ऐसे आग्रह कर रहे हैं, खुद को क्या करना चाहिए? हमें हमें आत्मान अभिसमीक्षा, हमारा हित ही देखना चाहिए। कोई कितना भी कहे, हमारा हित छोड़ के हमें कोई भी आहार नहीं करना चाहिए, आपका चाहे कोई भी कारण दे दो, लेकिन हमारे लिए जो हितकर है वही खाना हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऋतुनुसार आहार और देश के अनुसार आहार, ये भी दो मुद्दे हैं। हर ऋतु में हमारे यहाँ अगले अलग अलग क्षण और उत्सव होते हैं, तो उनमें खाना अलग अलग बनता है। हर हमारे त्योहार के लिए जरूरी नहीं कि कैडबरी ही बने, जैसे परदेश में बनती है, या केक ही बने, नहीं। हर त्योहार का हमारा जो पदार्थ है, स्पेशल रेसिपी है, वो अलग अलग होती है, वो ऋतु के अनुसार बनाई रहती है। जैसे अब बारिश है, बारिश के सीजन में अलग पदार्थ बनते हैं, वो भुने हुए पदार्थ ज्यादा बनते हैं। और आगे जाके शरद पूर्णिमा आ गई तो मीठे पदार्थ ज्यादा बनते हैं। फिर आगे जाके ठंडी का मौसम आता है तो उसमें बहुत सारे गुरु पदार्थ, मतलब जो पचने में बहुत काफी हल्के नहीं है, जड़ है, ऐसे पदार्थ, भारी है पचने में, ऐसे पदार्थ बनते हैं, क्योंकि उस समय ठंडी में वो पच भी जाते हैं, इसलिए उस समय वो बनते हैं। तो इस तरह से ऋतु के अनुसार, और ऋतु में जो उपलब्ध है वो भी, जैसे हम जब गर्मी का सीजन होता है तो आम ही ज्यादातर खाते हैं, क्योंकि आम उपलब्धि के अनुसार भी देखना चाहिए। और देश के अनुसार खाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि यातायात के जो साधन है वो बहुत बढ़ गए हैं। तो कश्मीर के सेब हमें यहाँ मिल जाते हैं और कहीं के कुछ फल हमें यहाँ मिल जाते हैं, तो हमें खाने हैं या नहीं खाने हैं? नहीं खाने हैं। हमारे लिए निसर्ग जो है ना, निसर्ग एक प्रकार की देवता है। तो हम जहाँ रहते हैं, हमारे रहने के लिए अनुकूल और उपयुक्त जो भी हमें लगता है, अन्न और दवाइयाँ, वो हमारे परिसर में 25 से 50 किलोमीटर के परिसर में अपने आप निसर्गतः आती है। तो उन्हीं का प्रयोग हमें ज्यादातर करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे लिए हितकर है। निसर्ग को पता चलता है कि इनको क्या चाहिए, किस ऋतु में चाहिए, वही लेना है हमें। तो ज्यादा बहुत बाहर बाहर कुछ लाके, आजकल हम थाई खाना खाते, इटालियन खाना खाते, कुछ भी खाते, तो इतना सारा खाने की जरूरत नहीं है। जो भी खाना है हमारे आसपास से, हमारे पूर्वज जो भी खाते थे वही हमें खाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आहार का प्रयोजन, ये तो हमें स्कूल में बताया जाता है कि शरीर का बलवर्धन, जो क्षति रहती है शरीर की,
उसे पूर्ति करना, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, उत्साह और हमारे कार्य करने की शक्ति को बढ़ाना और शरीर का धारण, ये हमारे आहार का प्रयोजन है। और जो आहार यह प्रयोजन पूर्ण करता है वही आहार हमें लेना चाहिए। कोई भी पदार्थ हम खाते हैं तो ये सब करता है या नहीं देखना चाहिए। ज्यादातर अभी यहाँ पार्टिसिपेंट्स मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और मैंने सोचा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा जरूरी है। छोटी मोटी कोई भी चीज हो तो वो नेट पर ढूंढने लगते हैं कुछ भी, और नेट पे ढूंढ के बता देते हैं, अपने माँ बाप को ज्ञान सिखाते हैं बहुत सारा। लेकिन जब जो खाना खाते हैं उसके बारे में नेट पे नहीं ढूंढते, हम क्या खा रहे हैं, इसका कितना उपयोग है हमारे शरीर के लिए, एक्चुअली ये नैसर्गिक है या कृत्रिम है, कुछ भी देखते नहीं। तो उनको इसका भी ज्ञान देना चाहिए हमें, और ये उनको आदत डालनी चाहिए कि देखना चाहिए कि ये आहार का प्रयोजन है। वो जो भी खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, उसे ये पूरा होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो ऐसा कोई भी खाना खाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। त्याज्य आहार, कौन सा खाना खाना नहीं चाहिए किसी भी हालत में? बासी, जो पुराना है, एक दिन पुराना, एक रात हो गई तो खाना बासी हो गया, वो नहीं खाना चाहिए। अधिक, अधिक मतलब मात्रा में अधिक, जितनी हमें भूख है उससे ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए किसी भी हाल में। अकाल, भूख नहीं हो तो खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ भी आ जाए सामने, बहुत अच्छी चीज भी आ जाए, नहीं खाना है। असात्म्य, सात्म्य यानी जो हमारी आदत है, जो हम खा रहे हैं पहले से, उसको साथ में बोलते हैं। असात्म्य यानी जिसकी आदत हमें नहीं है। तो एक तो ये रिसर्च ऐसा है, अमेरिका में हुआ था पीछे, कि आपको आप कोई भी पदार्थ डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये अपने डीएनए डिसाइड करते हैं। मतलब हमारे पुरखों ने जो खाया नहीं है, वो अगर हम अचानक से खाना शुरू कर दे तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। और अगर पुरखे हमारी 7 पीढ़ियों से, 8 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ियों से वो खा रहे हैं तो वो हमें डाइजेस्ट होगा, सीधी सी बात है। तो जो खाना हमारे पुरखों ने खाया है वही अगर हम खाए तो वो डाइजेशन के लिए वो प्रॉपर रहता है, और वही खाना चाहिए। जो नहीं खाया है उसको असात्म्य कहते हैं। जो उन्होंने नहीं खाया है वो अगर हम खाना खाए, मांसाहार जो नहीं करते, 7 पीढ़ियों से नहीं करते, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो असात्म्य है उनके लिए। जो करते हैं उनके लिए सात्म्य है, उन्होंने खाया तो कोई बात नहीं। बादाम, काजू, ये पदार्थ रहते हैं जो हमारे पूर्वज नहीं खाया हो तो हमें नहीं खाना चाहिए बहुत सारी मात्रा में। कभी कभार खाए तो बात अलग है, लेकिन रोज रोज ढेर सारी मात्रा में उसको नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार, मैंने जैसे पहले बताया कि दूध और खट्टे पदार्थ, दूध और खारे पदार्थ, ये विरुद्ध है, ये नहीं खाना चाहिए। इनसे त्वचा विकार बहुत ज्यादा होते हैं, रक्त विकार और त्वचा विकार, और इसके बहुत सारे रुग्ण हमारे क्लिनिक्स में आते हैं। और कृत्रिम, कृत्रिम यानी पैकेट वाला जो फूड रहता है, जिसपे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, तो उसमें वो खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आहार के पहले क्या करना चाहिए? जलपान वर्ज्य है, लाल बताया है, जलपान नहीं करना चाहिए आहार के पहले। और सेंधव और आर्द्र ये खाना चाहिए भूख बढ़ने के लिए। तो आजकल जो एपेटाइजर सूप वगैरह दिए जाते हैं ना, वो एपेटाइजर होते हैं एक्चुअली, लेकिन वो सूप की क्वांटिटी इतनी होती है कि वही आहार हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। सेंधा और अदरक, उसकी मात्रा भी इतनी होती है कि उसको प्रॉपर भूख लगती है, और उससे डाइजेशन भी हो सकता है। इसलिए ये भोजन से पूर्व ये लेना चाहिए। और अगर किसी को पाइल्स या और कोई उष्णता की समस्या हो तो उसमें अदरक नहीं लेना चाहिए। अपने वैद्यों से सलाह लेके ये ले सकते हैं सेंधा और अदरक, लेकिन जलपान तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आहार क्रम, किस क्रम से आहार लेना चाहिए? तो पहले मधुर पदार्थ खाना चाहिए, क्योंकि भूख लगी रहती है, और उस वक्त अग्नि भी प्रॉपर रहता है, अपनी क्षमता में पूरा रहता है, तो उस वक्त मधुर पदार्थ पच जाता है अगर उस वक्त खाए तो। इसलिए हमारे खाने में जब भी हम कोई ट्रेडिशनल खाना खाते हैं ना, तो देखो पहले जो मधुर पदार्थ बनता है वही पहले परोसते हैं। इसीलिए तो ये आजकल की जो फैशन है ना, कि स्वीट डिश बाद में खाई जाती है, लास्ट में खाई जाती है, पूरा खाना खा लेते हैं और लास्ट में स्वीट डिश, तो ये एकदम ही गलत है। वो ठीक तरीके से उसका डाइजेशन नहीं होता, और इससे बहुत सारी व्याधियां हो सकती है। तो सबसे पहले मधुर, और उसमें फिर बाकी खट्टा, तीखा, कड़वा, खारा ये पदार्थ रहते हैं, वो बीच बीच में लेते हैं हम टेस्ट के लिए। और थोड़ा कसेला जो रहता है, उसमें है छाछ, वो हम सबसे लास्ट लेते हैं, कसेला। उससे क्या होता है कि बाद में डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनका सिक्रेशन कम हो जाता है। जैसे जैसे हमारा जो आहार है वो आगे आगे जाता है इंटेस्टाइन से, वैसे वो डाइजेस्टिव जूस है वो कम हो जाता है। इसलिए कसेला छाछ सबसे लास्ट लेना है।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जलपान कब करना चाहिए? तो आहार के बीच में करना चाहिए, आहार से पहले नहीं, आहार के बाद में नहीं। पहले करेंगे तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा, बाद में करेंगे तो वेट बढ़ेगा। और सबसे इसमें जलपान आहार के साथ करना चाहिए, मतलब आहार के बीच में करना चाहिए। तो उसमें भी एक मैं कहानी सुनाऊंगी आपको, छोटी सी है। एक किसान था, वो पहले पहले लोग ऐसे प्रवास करते थे ना, तो पैदल ही जाते थे। वैसे वो पैदल गया था और उसके साथ वो उसकी जो रोटी और सब्जी वाली एक ये रहती है, थैली रहती है, तो वो थी। बीच में कहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, वो रोटी और सब्जी खा ली, 4 रोटी बड़ी बड़ी जो ज्वार की होती है महाराष्ट्र में, वो और सब्जी उसने खा ली। तो वो बाद में उसने एक बड़ा सा ये लेके पानी पी लिया, बड़ी सी बोतल लेके उसमें से पानी पी लिया। तो उसके पास एक वैद्य बैठा था, तो वैद्य को बहुत बुरा लगा, उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो किसान ने पूछा क्या हो गया? कहता है कि अरे ये पानी खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, खाने के बीच में पीना चाहिए। तो जो किसान था उसने फिर से वो पोटली खोली, उसमें फिर से 4 रोटी थी बची हुई, वो भी खा ली और कहता है हाँ ठीक, अब पानी बीच में हो गया? तो वैद्य कहता है हाँ हो गया, बराबर हो गया। तो ये किसान की बात अलग है, वो फिर से 4 रोटी खा सकता है क्योंकि उतने श्रम करता है। हमारी बात ऐसी नहीं है, हमें बीच में पानी पीना चाहिए और बाद में पानी 2 घंटे बाद, जब खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, तब हम पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भोजन के बाद क्या करना चाहिए? भोजन के बाद शतपदी, थोड़ा चलना चाहिए, वज्रासन कर सकते हैं थोड़ी देर, और वाम कुक्षी। वाम कुक्षी का मतलब है वाम कुक्षी पे रह के आप विश्राम कर सकते हैं, सोना नहीं है भोजन के बाद, सिर्फ विश्राम करना है, ये कर सकते हैं, तो उससे डाइजेशन में फायदा होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये इतना मैं आज टाइम लिमिट देख के मैंने इतना ही सिर्फ बताया है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आहार के बारे में बहुत बहुत ही परिपूर्ण है आयुर्वेद साइंस। और जो लोग आहार के इन नियमों का पालन करते हैं, उनको बीमारी होती ही नहीं है। स्वास्थ्य रक्षण के लिए आहार के नियमों का पालन करना है, इसलिए हम सब इसका पालन करें। और जो यहाँ मौजूद नहीं है, आज उपस्थित नहीं है, वो भी अपने घर में ये सब रूल्स जाके बताए और उसका फॉलो करे तो ज्यादा अच्छा है। और धन्वंतरी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये आहार के तत्व पालन करके हम सभी को स्वस्थ आयु मिले। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। इस चीज को मैं खुद भी फॉलो करूंगी और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फ्लुएंस करूंगी। आई विल डू माय बेस्ट फॉर दैट। नाउ प्रोसीडिंग अहेड, please welcome Dr. Manasi Deshpande, Professor, College of Ayurveda, Bharatiya Vidyapeeth, deemed to be University, Pune. Slides are visible? Yes, ma'am, it Okay. is. Thank you. Respected Vice Chancellor Sir, Rita Ma'am, all the faculty members, dignitaries, speakers, and friends. First of all, I am thankful to the university inviting me for this Tejaswini National webinar on role of Ayurveda in treating lifestyle disorders. When this is the dark, so you can see here the black color. So what comes to our mind first? It sleeps. It's a time to sleep. So today's my topic is sleeping patterns and the mental happiness. In this 15 to 20 minutes talk, I wish to cover all these topics which are here. The sleep, process of regulating the sleep, common sleep disruptive activities, deprivation symptoms regarding the sleep, sleep hygiene, way to promote sleep, and some of the Ayurvedic herbs which are useful as a brain tonic. So first, what is the sleep? Sleep is a natural behavior and a natural temporary state of rest during which an individual becomes physically inactive and unaware of surrounding environments, and many bodily functions slow down. Sleep is dynamic. Our body do not shut off completely, but there are lots of processes going on that are vital to our existence. It is essential to our existence, no matter how hard we try to fight
we want to sleep for at least part of every 24 hours. Ayurveda says that sleeping is one among the Trayo Upastambha, that is Ahara, Nidra, and Brahmacharya. These three factors which play an important role in the maintenance of organism. In our Ayurvedic literature, these factors, Ahara, Nidra, and Brahmacharya, have been compared with the three legs of sub-support and have been termed as a three Upastambha. The inclusion of Nidra in these three Upastambha proves its importance while describing the importance of Nidra. Ayurveda mentions that it creates the happiness in life, it maintains the consistency of the life, increase the strength, increase the power of brain, and prevents the life. Now coming to sleep and health. We all know that adults need 7 to 9 hours of sleep every night. Sleep important for our physiological functions, memory, and metabolism. Each individual have different needs for sleep and have different preference for sleep patterns. Good sleep is both amount of sleep get in night and quality of sleep is also important. Other benefits if we see about the sleep is lower the healthcare cost also. Average amount of sleep, as mentioned, that most adults needs between 7 to 8 hours of sleep. However, there are people who are short sleepers, need 6 or fewer hours of sleep, and people who need more sleep, that is 9 or more hours sleep. Sleep is change over the course of the lifespan. Infants sleep most of the day and gradually decrease over the first year. Children around age 10 need 9 to 10 hours sleep and they gradually decrease over the while. In adulthood, the sleep needs continue to decrease. Older adults usually need fewer than 8 hours of the sleep. So this is, you can see here, the average sleep is based on the age criteria. Now sleep patterns regarding. Basically, majority of the people follow the monophasic sleep pattern. That is one sleep period of 7 to 9 hours. Sleep once per day and 7 to 9 hours at night. Biophasic sleep is similar to monophasic sleep schedule. The schedule of here, the 6 hours of sleep at night with 1.5 hour nap. Again, the everyman, that is also one of the sleep patterns that for the 3.5 hours at night with 3 20-minute naps in the day. Diamoxy and Uberman, this is no main sleep, no any main sleep times here. Simply 4 30-minute naps in 24 hours in diamoxy, while in Uberman there is a taking 6 20-minute naps periodically. So this is the sleep patterns which are at present. Now we will see the process that regulate the sleep. How this sleep is regulated. There are first process that is known as a sleep pressure or sleep drives. Homeostatic pressure. Homeostatic is same level. Body attempts to keep all systems in balance. So in this phase, our body has several homeostatic processes. For example, when we need to eat, our body signals that we are hungry to encourage eating behavior. Similarly, when our temperature rises, our bodies initiate a sweet response to cool down our body temperature. Sleep is another homeostatic process. After we have been awake for a long period of time, our body encourages us to initiate sleep. Pressure of sleep builds up in our body as our time awake increases. The pressure gets stronger the longer we stay awake and decrease during the sleep, reaching a lower after a full night of good quality sleep. The homeostatic process begins to build again after we awaken. Here in figure you can see the dashed line represent potential increase in pressure to sleep, which will continue to build if sleep does not occur. Now, circadian rhythm. We all know about the circadian rhythm. This research is awarded Nobel Prize in 2017.
Circadian means about a day. How humans and animals themselves according to the internal clock and to the rotation of the earth. We have an area in our brain called that is suprachiasmatic nucleus, that is SCN, and that acts as a clock and regulate many of our 24 hours biological rhythms. SCN takes in informations about light through eyes to reset time of a day. Circadian rhythms works by helping to make sure that the body process are optimized at various points during the 24 hours period. There is a small group of biological clock cell in which some clock genes, important gene regulating circadian rhythms are found, which completely follow the time. Those cells are active at different times and guide the parts of our body, such as when to sleep, when to wake up, and when to eat. Apart from all this, uh, apart from this biological clock of the whole body, different organs also have different biological clocks. And according to 24 hours, the biological clocks determine different functions. Here you can see the first clock is regarding the biological clock or circadian clock, and second one that is specifically for the organ cycle. Now, synchronization of these two phases, that is sleep pressure and the circadian process. The sleep awake cycle is one of the most clear and critical example of the importance of the circadian rhythms. If we are active during the day and sleep at night, homeostatic sleep pressure drive and circadian wakefulness rhythms are synchronized, as here you can see here in the figure. As shown, wakefulness, red line, and sleep pressure rise, is the blue line. During daytime, with the wakefulness overriding the pressure for sleep, and sleep onset occurs when sleep pressure drive is high and wakefulness is dropping. Morning awakeness occurs sometime after wakefulness begins to rise, override the sleep pressure. When jet lag is there, or working night shift leads to loss of the synchronization of this process, sleep pressure drives and circadian wakefulness rhythm. Circadian rhythm, is 24 hours body clock, has the again relations with the sleep and the mental health. This is also responsible for the sleep function. Regarding this, this promotes the two types of the hormones, cortisol and the melatonin. Cortisol level highest in the morning. It's known as a stress hormone and help us to cope up with when we are under pressure. Chronic release can lead to sleep problems and long-term mood disorders like anxiety, depression, and so on. While melatonin is a sleep hormone, the hormone is released in response to darkness and tells body it is time to prepare for the sleep. Some are the sleep disruptive activities which can disturb the sleep, just like working until the bedtime, doing other activity in the bedroom, using screens in bed immediate before the bedtime, staying in bed and worrying while unable to sleep, sleeping in unrestful environment. The environment is not pleasant or dark environment. Exercising vigorously within 1 hour before the bedtime. Some food and drinks also disturbing the activity, disturbing the sleep, like drinking alcohol within the 2 hours of the bedtime, drinking too many fluids that goes of the night, eating a large meal before the bedtime, and so on. So this activity may disturb the sleep. Sleep deprivation symptoms and consequence of sleep deprivations. Feeling extremely tired during the day is one of the hallmark sign of the sleep deprivations. Along with, we can see the slow process of thinking, reducing the attention span, decline the memory loss or decline in the memory, poor or risky decision making, lack of energy, mood changes, feeling of stress, anxiety,
irritability. Now, acute day sleep deprivation raises the risk of unintentional errors and accidents. Drowsy driving, which involves slow reaction time and the risk of sleep, can be life-threatening. People who are sleep deprived are more likely to struggle in work settings or to experience mood changes that may affect the personal relationship also. Uh, sleep deprivation symptoms, chronic sleep deprivations can contribute to a wide range of the health problems. Sleep plays a fundamental role in the effective functioning of nearly all the systems of our body. So, persistent lack of sleep creates significant risk, physical and the mental. Studies have found that strong association between sleep deficiency and cardiovascular problems, including high blood pressure, coronary heart disease, heart attack, and stroke. Insufficient sleep appears to affect the body's ability to regulate the blood pressure, blood sugar, increase the risk of metabolic conditions like diabetes. Research has also found that people tend to consume more calories and carbohydrates when they don't get enough sleep, which is just one of several ways that poor sleep may be tied to the obesity. Sleep deficiency has been shown to lead to declined immune systems, including a poorer response to the vaccine. Hormonal abnormality also seen because sleep helps the body properly produce adequate level of various hormones. Essentially increase susceptibility to hormone problems with sleep deprivations. Sleep and mental health are closely intertwined, and poor sleep has strong associations with conditions like depression, anxiety, bipolar disorders, schizophrenia, and so on. If any problem with sleep problems, with insufficient sleep or daytime sleepiness, first we have to consult with our doctors. In most of cases, focus on sleep hygiene. Sleep environment and daily habits is a central component of preventing and treating the sleep deprivations. So first, these sleep deprivations, don't cope with it. Many people get insufficient sleep because they accept that sleep deprivation is a normal. Rather than take necessary steps to sleep more, they drink caffeine or energy drinks. None of these approaches sustainable solutions to sleep deprivations. They may help get through the day, but the cumulative effect of sleep deficiency will still take a lot both in short and long term effects. For this reason, it is important to refuse to accept a lack of sleep as a normal and instead focus on sleeping more and getting higher quality of sleep. Second important thing is make sleep as a priority. Chronic insufficient sleep often occurs when people choose to sacrifice sleep in terms of in favor of work or in other obligations. To counteract this, it's critical to take steps to make sleep as a priority. So maintain stability, consistent sleep schedule, set boundaries in work and social life, and a steady bedtime routine can put in the right frame of mind to sleep well each night. Then customize your bedroom environment. Design bedroom environment to be ideal for relaxation. To minimize potential sleep disruptions, try to make sure your bedroom is as quiet and dark as possible. Avoid things that can interfere with the sleep. A useful step in addressing sleep deprivation is to avoid things that can offer negative effects on sleep. The best that is the electronic devices. TV, cell, phone, computer can keep mind stimulated. Living still wired with when want to go to bed can also interfere with the circadian rhythm. And as a result, it's best avoid using electronic devices for an hour or more before going to bed. Alcohol, caffeine like drinks also stimulate, and caffeine makes alert because it can stick around in system for several hours.
So best avoid to eat in the afternoon and the evening. Make a most of our day. So getting frequent sunlight exposure during the day supports a healthy circadian rhythm that helps alert during the day and sleepy at night. According to Ayurveda, Ayurveda says, one should awake in Brahma Muhurt. Brahma Muhurt is early morning. It is auspicious time to get up from the bed. That is nearly 4 to 5 a.m. It is best time for the meditations. Swap, that is day sleep, and Ratri Jagran, that is late night waking, are contraindicated according to the Ayurvedic classics. Sleep during daytime increase the restlessness in the body, and remaining vigil during night causes dryness in the body. Night duty disturbs sleep pattern. Person who works in night develops symptoms like lack of concentration, disorientation, loss of sleep, loss of appetite. Hence, Ayurveda suggests not to work at night, not to sleep in daytime. Different atmosphere changes affects all living organisms. So, to achieve maximum benefits from the seasonal changes, one should follow the seasonal regimen, that is the Rutucharya. According to Ayurveda, daytime sleep is recommended only in the Grishma Ritu, that is in the summer season. In Grishma Ritu, duration of night time is short, dryness and roughness in atmosphere is which visitated Vata dosha. In all other remaining 5 seasons, Divaswap is contraindicated because visitation of kapha and pitta dosha that increase the risk of disease caused by this kapha and pitta. Along with that, the simple remedies like oil massage and application of sandalwood paste to head and face is also important. Shirodhara. Shirodhara is an ancient Ayurvedic healing technique that is used to cure eye and neurological issues, memory loss, certain skin problems, gray hair, sleeping problems, and some types of the allergies. Some itself suggests Shiro means head and Dhara means flow of the oil. Sali rice, type of rice with curd milk and anakta substance are also very important. The most important thing is the before bed try to grandma sleep remedy, that is a glass of warm milk. Before sleep, eat 1 hour before the bed, along with the nutmeg, cinnamoms and cardamom, because nutmeg helps to induce the sleep, while the cardamom and the cinnamoms promote the healthy digestion, which will also help for the sleep. Some other way to promote the sleep, that is pleasant music, is also used to induce the sleep. Do an electric fast. We know that this is Shravan month and we all are doing the various fasts one day or any days. Same way we can do an electric fast. Spend an electric free weekend at home. Use only candlelight or firelight. No electric or battery operated lights, phones, TVs, or the computers. Moderate exercise during the day can also help people sleep better, while not getting enough sleep may lead to lower level of daily physical activity. It also proves that the exercise has small positive effect on total sleep time, sleep deficiency, that is time asleep or time in bed, shorter time to fall asleep, and large effects on overall sleep quantity. Some evidence that exercise alone can improve the insomnia, greater increase in the sleep quantity, and reduction in the mental health symptoms. Yoga, meditation, and pranayam is also helps to set the mind, body, and soul in calm and relaxed state. Here, the meditation is state of equilibrium between body and mind, and any form of meditation can practice it. The simple way is the breath awareness meditation, that is the deep breathing, anulom vilom, pranayam, brastrika, kapalabhati, or sauchan pranayam. Yoga is also important because this science is healthy and better living. Now prove that physical, mental, moral, intellectual, and spiritually helpful. Yoga has now been applied as a routine practice for physical and mental fitness. Incorporate gentle yogasan or restorative yoga poses can help to help sleep.
Surya Namaskar is a routine that promotes the relaxations and calms in the mind, body, and the soul. Some of the drugs is known as in nootropics herbs, that is Medhya Rasayan. These herbs are useful to rejuvenate the brain power and the intellectual. These are the some examples. Like Amalki means Amelia officinalis, Yashtika Rhiza glabra, Sarpagandha, that is Laurfia serpentina, Brahmi, that is Bacopa monieri, Mandupani centella asiatica, Jeramansi nardos, Jeramansi, Kushpanda, Benincasa hispida, Shankapuspi, convolvulus, Equus calamus, and Jyotishmati like drugs, that is Selectus paniculatus. When we consume this type of the drugs prior to bedtime, it provide valuable neuroprotective properties in addition to enhancing memory, cognition, preventing neurodegenerative conditions, and restoring the normal sleep. Just one request: about the consultations of the physician, do not use these herbs as it is. So finally, what is the takeaway message? Sleep is the essential condition of life. Just like ahara, nidra, that is sleep is also the important part. We have due cognizance with the natural and the biological clock, and systemic effects beside its relaxing effects improve from the sleep. So sleep solves the everything, and sleep is the self-care too. So sleep is the golden chain that ties body and the health together. Wish you a healthy, happy, peaceful sleep for maintaining good physical and mental health, because sleep is as important to health as well-being as nutrition and the exercise. Healthy sleep. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. We are honored to hear your profound words, ma'am. Now, please invite with me Dr. Kamini Kaushal, Principal Government Ayurveda, Yoga and Naturopathy College, Jaipur. Thank you. Thank you so much, ma'am. Can you hear me? Can you hear me, ma'am? Yes, Yes, we ma'am. can hear you. Yes, ma'am. We can. Okay, thank you so much. मैं सबसे पहले वीसी सर का धन्यवाद देना चाहूंगी और कविता मैम का कि उन्होंने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया अपनी बात कहने के लिए। अभी जो मैं अपने पूर्व वक्ताओं को सुन चुकी हूँ उसमें मैंने देखा और डॉक्टर कविता ने जो हमारे आयुर्वेद की 5 बेसिक एलिमेंट थ्योरी बताई और सभी जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स की लिस्ट बताई और वीसी सर ने जो एक होलिस्टिक अप्रोच बताई और साथ ही कहा कि कुछ चैलेंजेस हैं और हमें उस सिंपल लैंग्वेज में आयुर्वेदिक सिस्टम को कम्युनिकेट करना चाहिए कि हम जनरल पब्लिक तक पहुंच सके। तो इसीलिए मैं वीसी सर से आग्रह करूंगी कि मुझे परमिशन दें कि मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जहां तक मैं देख रही हूँ पार्टिसिपेंट्स जो हैं अदर देन आयुर्वेदा फैकल्टीज हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को जो आयुर्वेद की लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ टाइप की लैंग्वेज है और आम पब्लिक उस लैंग्वेज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती और इसी कारण से वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे डॉक्टर सुषमा रावत जी ने होलिस्टिक अप्रोच बताई आयुर्वेद की, सुचित्रा कुलकर्णी मैम ने आहार के ऊपर बता दिया, मानसी देशपांडे मैम ने निद्रा के ऊपर बता दिया। तो आज मैं जर्नल जो प्रिंसिपल है आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स हैं कि किस तरीके से आयुर्वेदा जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में अपने पीछे क्या कंसेप्ट रखता है। तो आयुर्वेदा में अगर हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के नाम से कुछ ढूंढे तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, बल्कि मैं आपको एक जिसमें समझाऊं कि हम
क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे सोचते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाइफ स्टाइल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। अब आयुर्वेद में इंडिविजुअल के लिए आयुर्वेद की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आयुर्वेद जो भी चीज उपलब्ध करवाता है वो कस्टमाइज्ड अप्रोच उपलब्ध करवाता है, यानी इंडिविजुअल के लिए ट्रीटमेंट बताता है। जैसे एलोपैथिक में होता है, मॉडर्न मेडिसिन में होता है कि एक ही पैरासिटामोल सभी पेशेंट के ऊपर काम करती है, ऐसे आयुर्वेद की कोई मेडिसिन एक सेट फॉर्मुलेशन नहीं होता कि सभी जनरल पब्लिक पर काम करेगी। इसलिए आयुर्वेद की जो ब्यूटी है वो इंडिविजुअल रिलेटेड होने के कारण लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का जो कंसेप्ट है एकदम फिट बैठता है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर वो हुआ, वो डिसऑर्डर जो एक इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल से रिलेट करता है और जो बिना किसी इन्फेक्शन के होने वाला डिसऑर्डर है, यानी लंबे समय में पैदा होता है वो डिसऑर्डर और लंबे अवधि के लिए वो रोग में कन्वर्ट हो जाता है। हमें मालूम भी नहीं चलता कि हमारे बॉडी के अंदर कब रोग पनप गया और हम कब इससे ग्रसित हो गए। अब मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से तो हम ज्यादा से ज्यादा शरीर को अफेक्टेड मानते हैं किसी भी डिजीज से, लेकिन आयुर्वेद कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो ये जो हमारा ये पूरा एक फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है वो उसके बाद जिससे हम सोचते हैं मींस माइंड और एक जो कॉन्शियसनेस है यानी स्पिरिट, बॉडी माइंड स्पिरिट, और जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं बॉडी माइंड स्पिरिट एंड एनवायरनमेंट, अगर इसके अंदर कोई इम्बैलेंस हो जाए और इसके कारण कोई डिजीज डेवलप हो जाए तो उसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा जाता है। यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल के द्वारा जिन डिजीजेस को हम प्रिवेंशन कर सकते हैं वो डिसऑर्डर हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो डिजीज आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तभी पैदा होती है जबकि इम्बैलेंस होता है हमारे इन 4 फैक्टर्स में, यानी बॉडी में, माइंड में, स्पिरिट में, एनवायरनमेंट में अगर कोई इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस का तात्पर्य आप इन शॉर्ट समझ लीजिए कोई स्ट्रेस पैदा हो गया, तो उसके कारण हमारा जो एक इंडिविजुअल पर्सन का जो कॉन्शियसनेस है वो अफेक्ट हो जाता है, और जैसे कॉन्शियसनेस अफेक्ट करता है वैसे कि वैसे ही हमारा शरीर अफेक्ट करता है, हमारी आत्मा उससे ग्रसित हो जाती है, और जब एक इंडिविजुअल बेचैन हो जाता है तो बेचैन ही उसके अंदर बीमारी पैदा करने का कारण बन जाती है। अब आयुर्वेद इससे कैसे कनेक्ट करता है? आयुर्वेद का मतलब ही होता है वेद ऑफ लाइफ, यानी नॉलेज ऑफ लाइफ, एक ऐसा वेद जो लाइफ की नॉलेज हमें बताता है। तो नॉलेज ऑफ लाइफ के होने के कारण स्पेशली ये हमारे डाइट को, हर्बल रेमेडीज को, एक्सरसाइज को, मेडिटेशन को, ब्रीदिंग को, और जो फिजिकल जो थेरेपीज हैं उन सबको इंक्लूड करता है आयुर्वेद। अब आज की जनरेशन में अगर हम देखें तो यंगर जनरेशन सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से प्रभावित हो रही है, और यही जनरेशन जो है हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये, और अगर हम मॉडर्न परिभाषा में देखें, अगर किसी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा कि आयुर्वेद क्या कह रहा है, मॉडर्न क्या कह रहा है, तो बात दोनों एक ही कह रहे हैं। मॉडर्न दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि हमारी बॉडी एक मशीन है, समझिए हमारी बॉडी एक मशीन है जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर का बैलेंस चाहती है। अगर उसमें इन 6 तत्वों में कोई इम्बैलेंस हो गया तो हमारी मशीन क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो एक तरीके की जो डिजीज आ गई जिसे बिना किसी इंफेक्शन के आया, वो मशीन जब खराब हो गई, यानी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित हो गई, वही लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहलाता है हमारी शरीर में। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में जैसे कि कविता मैडम ने सभी डिसऑर्डर की लिस्ट दी, लेकिन उसमें एक डिसऑर्डर
चूंकि एक महिला समूह यहाँ पर महिला वक्ताएं हैं और महिलाओं का ही ये यूनिवर्सिटी है, तो एक डिजीज जो रह गई उसको मैं आपको बताना चाहूंगी, हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हाइपोथायरॉयडिज्म आज के समय में 42 मिलियन जो जनरेशन है भारत की, जो हाइपोथायरॉयडिज्म से अफेक्टेड है। और हाइपोथायरॉयडिज्म एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। कब ये महिलाओं को, अब तो पुरुषों को भी बहुत ग्रसित कर रही है, महिलाएं इससे सबसे ज्यादा ग्रसित है। यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। आप देख लीजिए, जिन लोगों में, जो लोग समय पर खाते नहीं है, समय पर उठते नहीं है, अध्यात्म का सहारा नहीं लेते हैं, अच्छा सोचते नहीं है, उन सबके घर में वायलेंस मिलता है। तो ये जो आजकल डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर ही है। अब आयुर्वेद कहता है कि हेल्थियर लाइफ स्टाइल क्या है। हेल्थियर लाइफ स्टाइल के लिए आयुर्वेद कहता है कि भाई आपको कोई भी डिजीज हो, कोई भी, इन जनरल की बात कर रही हूँ, चाहे वो आपकी हार्ट डिजीज हो, चाहे वो आपकी डायबिटीज मेलाइटस हो, चाहे आपकी जॉइंट पेन हो, चाहे स्ट्रोक हो, एनीथिंग, ऑस्टियोपोरोसिस हो, कुछ भी हो, तो आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले आप सुबह समय पर जागिए। जब उजाला होता है, जिसको हम सूर्योदय कहते हैं, उसके 1 घंटा पहले जागिए। उससे क्या फायदा होगा, आप खुद जा करके देखिए। पहले जब मैं पढ़ती थी तो मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि रात के समय लेट नाइट तक मत पढ़ा करो, तुम सुबह जल्दी उठ के जागा करो। लेकिन मैं कभी नहीं जागी। इस इम्पोर्टेंस को मैंने तब जाना जब मैं आयुर्वेद में आ गई। और आयुर्वेद में जब पहला चैप्टर ही मैंने डेली रूटीन के बारे में पढ़ा और उसमें लिखा था कि सूर्योदय के समय जागना चाहिए। अब तो खैर मेरा रूटीन है कि मैं 4 बजे जाग जाती हूँ, और मोस्टली हमारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग जागते हैं। तो आप देखिए, सुबह जाग करके देखेंगे कि आपको अपने आप एक नेचुरल हंगर फील होता है। जैसे ही वो हंगर आपको फील होगा, आप या तो पानी पिएंगे, सुबह सुबह आप कुछ खाना नहीं चाहते हैं, तो जैसे आप पानी पिएंगे या गर्म पानी पिएंगे या चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ भी लिक्विड डाइट आप देखते लेते हैं, वो आपकी बॉडी को एक तरीके से क्लीनिंग का काम करता है। और जैसे ही आपकी बॉडी क्लीन होती है, आप एक स्फूर्ति फील करते हैं, एक नई ऊर्जा आती है। तो जागना आपके लिए एक सबसे बड़ी औषधि हो गई। फिर आयुर्वेद कहता है कि आप सही समय पर अगर जाग रहे हैं तो आप 2-3 दिन ऐसा करके देखिए, आपकी बॉडी अपने आप, जब आप दिन में नहीं सो रहे हैं तो रात को बिल्कुल 9 to 10 o'clock के बीच में आपकी बॉडी आपको कहेगी कि सो जाइए। यानी आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है एकदम सेट हो जाता है, और 3-4 दिन में आप बिना अलार्म के अर्ली इन द मॉर्निंग जाग जाएंगे और रात को अर्ली गो टू बेड वाली कंसेप्ट पे आप आ जाएंगे। और यही बायोलॉजिकल क्लॉक का कंसेप्ट आयुर्वेद ने दिया, लेकिन नोबेल प्राइज किसको मिला? एक आप कहेंगे कि गैर भारतीय को प्राप्त हुआ। खैर मैं उस कंसेप्ट पे नहीं जाती हूँ, साइंस हमारा है, लेकिन हम उसको इतना प्रोपोगेट नहीं कर पाते हैं, उसको हम अपनी भाषा से निकाल के दूसरों की भाषा और दूसरों के स्टैंडर्ड पर समझा नहीं पाते हैं, शायद इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रह पाते हैं। फिर जैसे ही आप जागेंगे सुबह जल्दी, उसके बाद आप थोड़ा सा जब भूख महसूस करते हैं और आप कुछ खाते नहीं है, सिर्फ गर्म पानी वगैरह लेते हैं, उसके बाद आप नेजल ड्रॉप्स डालिए। अभी कोरोना काल में तो सभी लोगों ने नेजल ड्रॉप्स यूज किया, चाहे आपके पास कोकोनट ऑयल हो, चाहे सेसमी ऑयल हो, कोई भी आप खाने वाला ऑयल लीजिए, अपनी हथेली पर रखिए और 2 ड्रॉप की एक नॉस्ट्रिल में डालिए, दूसरी नॉस्ट्रिल में 2 ड्रॉप डालिए और अपने ऊपर खींच लीजिए। ये जो नाक से लिया हुआ ऑयल या आपके नाभि पर, नेवल पॉइंट पर लगाया गया ऑयल, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपने कभी बचपन में साइकिल चलाई होगी। साइकिल के चक्के को आपने देखा होगा कि सिर्फ जो बीच में एक्सेस होता है, उस एक्सेस से ग्रीस लगाते हैं और पूरी साइकिल की रिम के ऊपर वो ग्रीस पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आपके नाक में डाला गया वो नेजल ड्रॉप या आपके नेवल पॉइंट पर लगाया गया वो ऑयल आपकी पूरी बॉडी को ओलिएशन करता है। जिन बहनों के
जो एड़ियां फटती हैं या ये लिप्स क्रैक होते हैं, आप इसको यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और आपकी पूरी स्किन की एक एक पॉइंट आपको ऐसे लगेगा थोड़े ही दिन बाद कि बिल्कुल एकदम चिकनापन आ गया है। तो ये हमारे जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, बिल्कुल माइन्यूट चैनल्स हैं, उनको ओलिएशन करने के लिए ये 2 पॉइंट, हमारे 2 ओपनिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। ये हमारी डेली रूटीन में हमको यूज करनी चाहिए। उसके बाद आप अपना डेंटल केयर करिए, चाहे आप अपने दांतून से दांत मांजते हो, चाहे आप मंजन से यूज करते हो, चाहे आपको कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हो, आपको डेंटल हाइजीन से अपना ध्यान रखना है, क्योंकि डेंटल हाइजीन से आपका मेंटल फिटनेस भी रहता है और बॉडी फिटनेस भी होता है। एक मैंने अपने अंडर में एक बीडीएस डॉक्टर को पीएचडी करवाई थी कि हमारे डेंटल हाइजीन किस तरीके से हमारी बॉडी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो उसमें जो हमने हेल्दी और अनहेल्दी वॉलंटियर्स पर काम किया था, तो मैंने यही देखा था, जिन लोगों के डेंटल हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, उनका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता, और जिनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उनकी हेल्थ उतने हेल्दी नहीं होते वो लोग। ये आयुर्वेद इस कंसेप्ट को मानता है। उसके बाद आप अपना बात लीजिए, जो भी शावर वगैरह आप लेते हैं वो लीजिए, ब्रेकफास्ट करिए, फिर उसके बाद आप अपने वर्क पर जाइए। और दिन में आप जो लेते हैं, जैसा कि मैम ने आपको बताया अभी, सुचित्रा कुलकर्णी मैम ने, कि आपको जब भूख लगे तो आप भोजन कर लीजिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। और जब आपको रात्रि में डिनर लेना है तो बिल्कुल लाइट डिनर लीजिए। आपको ब्रेकफास्ट जस्ट लाइक ए किंग और डिनर जस्ट लाइक ए बेगर, बहुत ही अल्प थोड़ा नापातुला लेना है, और रात को आप टाइम से अपने सो जाइए। तो ये तो हुई आपकी आयुर्वेदिक बेस्ड एक हेल्दी लाइफ स्टाइल डेली रूटीन, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो आयुर्वेद आपको कोई मंत्र नहीं देता, सिर्फ एक टूल प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके, जिसको समझकर हम लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और आयुर्वेद से हम अपनी खोई हुई जो जैविक शक्ति है, वाइटल कैपेसिटी है, उसको वापस पा सकते हैं, क्योंकि हर दिन हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं। उन कैटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए हमारे पास कुछ एनाबॉलिक प्रक्रियाएं भी होनी चाहिए, ताकि हम उनसे एनर्जी गेन कर सकें और हम स्वस्थ जीवन जी सकें। तो ये जो एनाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं, उनको बढ़ाने में आयुर्वेद सहायता करता है। अब चाहे लाइफ स्टाइल आपकी किसी भी प्रकार की हो, कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल हो, रूरल लाइफ स्टाइल हो, अर्बन लाइफ स्टाइल हो, माउंटेन लाइफ स्टाइल हो, या बीच लाइफ स्टाइल हो, कोई भी लाइफ स्टाइल हो, आपको फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दियर फूड और गुड स्लीप, ये 3 फैक्टर हर लाइफ स्टाइल डिमांड करता है। और इसी के कारण इन तीनों को अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ना के समान होने की गुंजाइश रहती है। इन शॉर्ट मैं आपको कहूंगी कि अगर आप सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो आपको अपनी सिटिंग इससे कम कर देना चाहिए, और सोबर लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए। बहुत ज्यादा चकाचौंध में नहीं जाना चाहिए। आफ्टर 45 ईयर्स के बाद तो लाइफ को बिल्कुल जटिलताओं से दूर रखना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, और कुछ डिजीज पर मैंने लगातार काम भी किया है, तो मैंने पेशेंट के माध्यम से भी यही जाना है। और फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए हमेशा। ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की हमें एक संकेत मिलता है। अब कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो गया। सबसे पहले आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है, तो समझ जाइए आपको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। चाहे वो आपकी जॉइंट में स्वेलिंग आ गई है, चाहे आपके चेस्ट पर स्वेलिंग आ गई है, चाहे आपके एब्डोमेन पर स्वेलिंग आ गई है, चाहे आपके लीवर पर स्वेलिंग आ गई है, आपको थकान हो रही है बिना वजह,
अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है तो ये 3 चीजें आपको बताती हैं कि आपको डेफिनेटली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब लाइफ स्टाइल सभी लोगों की अलग अलग होती है, क्योंकि जिसका जैसा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसका लाइफ स्टाइल वैसा ही होता है। किसी का एजुकेशन लेवल डिफरेंट है तो उसका लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट होगा। किसी की फैमिली वैल्यूज डिफरेंट है तो उसका लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट होगा। किसी का सोशल नेटवर्क अलग है तो उसका लाइफ स्टाइल भी अलग हो। किसी का एज फैक्टर अलग है तो उसका लाइफ स्टाइल भी अलग होगा। तो और आपस के हमारे रिलेशंस कैसे हैं इस पर भी लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है। तो लाइफ स्टाइल के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं कहूंगी कि एक आम आदमी के लिए तो लाइफ स्टाइल को समझना बहुत जटिल चीज होती है, लेकिन फिर भी आप फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप और प्रॉपर बैलेंस डाइट, इन 3 में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता है। सिर्फ हमारी भावनाएं हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। मुझे अगर मेरे अंदर ये भावना है कि मुझे एक बैलेंस लाइफ स्टाइल जीनी है, तो फिर मुझे कोई ना ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, ना चकाचौंध की आवश्यकता है, ना किसी पद की आवश्यकता है, और ना ही ज्यादा किसी से जैसे कहते हैं कि मुझे कोई कंसल्टेंट की आवश्यकता है। मुझे एक समझ चाहिए। वो अगर हम समझ डेवलप कर पाए, और जैसा कि हमने देखा कि कोरोना काल में इस 1-1.5 साल में ही आयुर्वेद के प्रति लोगों की समझ एकदम से क्यों विकसित हुई, क्योंकि हमारे जीन में आयुर्वेद तो था, घर घर में आयुर्वेद था। आज से 200 साल पहले आयुर्वेद घर घर की पैथी हुआ करती थी, लेकिन चूंकि अब बीच में हमारे जीवन में वही लाइफ स्टाइल, मतलब सीडेंटरी लाइफ स्टाइल आ गया। हम खुद आलसी हो गए, खाने पर हम टाइम नहीं देते थे, हम प्रॉपर स्लीप पर टाइम नहीं देते थे, हमारे अच्छे सोच विचार पर टाइम नहीं देते थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे को जो बीमारियां हुई, उन बीमारियों से निजात पाने के लिए हम ऐसे गोली कैप्सूल अपनाने लगे, वो जस्ट जाए और 5 मिनट के अंदर ट्रिगर करके हमारी बॉडी पे काम करें, और आधे घंटे में तो हम रिलैक्स फील करने लगे। तो आप ये खुद ही सोचिए, जो चीज बहुत जल्दी काम करती है तो उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, और जो चीज धीमे धीमे काम करती है वो काम लाइफ लॉन्ग होता है और अच्छा काम होता है। जैसे कि हम अपने जनरल रिलेशनशिप में भी देखते हैं कि जो रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और स्वीट रिलेशनशिप होते हैं। ठीक ऐसे ही आयुर्वेद भी एक स्वीट रिलेशनशिप डेवलपर पैथी है। इसमें एक बार आपको फेथ डेवलप हो गया तो आप इसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगे। अब बस जरूरत, जो चैलेंज सबसे बड़ा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हम आम जन तक इस पैथी को कैसे पहुंचाएं। एक सरल शब्दों में आम जन की भाषा में इस पैथी को पहुंचाने की आवश्यकता है। जैसे कि इंडिया में अभी जो अगर हम देखें तो मीट डाइट, जो रेड मीट डाइट या वाइट मीट डाइट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और लो वेजिटेबल डाइट का चलन बहुत कम होता जा रहा है। टोबैको, अल्कोहल, एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो ये सारे जो 5-6 फैक्टर मिलकर के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को बढ़ा रहे हैं। ये 6 फैक्टर भी हमारी लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इन सब फैक्टर से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है हमारे एनवायरनमेंट में। जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में एक इंसान सरवाइव करता है तो वो चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो, कितना भी हेल्दी हो, अल्टीमेटली उसके जो जीन है, उसकी जो ब्रेथ है, उसका जो ब्रेन है, वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन गेन करता है, और वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी के जो न्यूक्लियस हैं, सेल्स हैं, वहां तक आकर के हमारी डाइजेस्टिव फायर को प्रभावित करते हैं। और जैसे ही हमारी डाइजेस्टिव फायर मंद होने लगती है, लो फ्लेम होने लगती है, हमारी बॉडी जो है बीमार होने लग जाती है। तो आयुर्वेद कहता है कि आप सिर्फ इस बॉडी फायर की, जो डाइजेस्टिव फायर है, उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए तो आपको किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होगी। ये कंसेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए चूल्हे पर हमने एक बर्तन चढ़ाया हुआ है, अगर हमारी स्टोव की लो ज्यादा या कम हुई तो या तो ज्यादा फ्लेम होने से हमारा भोजन जो है जल जाएगा और हम उसको खा नहीं पाएंगे,
या फिर कम फ्लेम होने से वो भोजन अध पका रह जाएगा, तब भी हम उसे खा नहीं पाएंगे, मतलब हमारी यूजलेस होगा वो भोजन। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में भी फायर का कंसेप्ट है। अगर हमारी फायर, डाइजेस्टिव फायर प्रॉपर नहीं है, तो हम कितना भी प्रॉपर डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में डिसऑर्डर पैदा करेगा, और इस डिसऑर्डर के कारण हम अल्टीमेटली बीमार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें हमारी डाइजेस्टिव फायर की रक्षा करनी चाहिए, और डाइजेस्टिव फायर की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको भूख ना लगे तब तक आपको भोजन नहीं करना है। आप गर्म पानी का सेवन कर लीजिए, लेकिन बिना भूख भोजन मत करिए। जैसे कि कविता मैम ने कहा कि हमारी बॉडी 5 बेसिक एलिमेंट थ्योरी पर काम करती है। यस, नो डाउट, आयुर्वेद कहता है कि स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ये जो 5 एलिमेंट है इस पूरे एनवायरनमेंट में, जिस 5 एलिमेंट के अलावा आप बता दीजिए कौन सा छठा एलिमेंट हमें दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो इन 5 एलिमेंट से ही दुनिया का हर चीज, कंकड़ पत्थर, नदी, तालाब, हर चीज बनी है। ये लकड़ी, पत्थर, हर चीज, कोई भी ऐसी चीज, पेड़ पौधा, जानवर जो नहीं है जो इन 5 एलिमेंट के अलावा बना हो। तो इंसान भी इन 5 एलिमेंट से ही बना होता है। जब हमारा शरीर इन 5 एलिमेंट से बनता है तो हमारे शरीर में 3 टाइप के पिलर होते हैं, जिनको हम वात, पित्त, कफ कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, ये वात, पित्त, कफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का काम करते हैं। मीन्स क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, ये तीनों ही काम इन 3 के द्वारा होता है। यानी आयुर्वेद देखिए कितना ब्यूटीफुली, इजीली अपने कंसेप्ट को समझाता है। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ संस्कृत लैंग्वेज के होने के कारण हम उन कंसेप्ट को थोड़ा टिपिकल मानते हैं, लेकिन एक समय था जब हमारे देश में संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, तो ये चीजें बहुत इजी थी। आज इंग्लिश हमारी बोलचाल की भाषा है, तो लेकिन हम सबसे पहले तो हमारे इंडियंस को समझा पाए कि आयुर्वेद क्या है सरल शब्दों में, तब हम विदेशियों को समझा पाएंगे। आज की तारीख में विदेशी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। खैर, मैं अपनी बात पर आती हूँ कि जो वास्तविक कफ है, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। यही हमारी बॉडी में टिश्यू बनाते हैं। हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको पूरे शरीर में असिमिलेशन का, मतलब फैलाने का काम करते हैं, और जो फैलाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको एलिमिनेट करने का काम भी ये वास्तविक कफ ही करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहती है। अब बात आती है कि अगर हमारी बॉडी में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो जाए, पहली बात तो अगर आपने आयुर्वेद का पालन किया तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर 90% होंगे ही नहीं। अगर हो जाते हैं तो उनको क्या करिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। नंबर 1, जिन्हें चेंज किया जा सकता है, ऐसे फैक्टर जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और ऐसे फैक्टर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज हो गए, या स्मोकिंग, अल्कोहल हैबिट्स हो गई, इन सबको हम चेंज कर सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में सबसे पहले जिनको हम चेंज कर सकते हैं उन पे फोकस करके काम कीजिए और उनको चेंज कर डालिए, तो आपकी बॉडी में से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नाम की चीज जो 10% है वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब उन फैक्टर्स को फोकस कीजिए जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज है, हेरिडिटी है। तो एज के अकॉर्डिंग आयुर्वेद हमें गाइडेंस देता है कि किस एज में हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये डिटेल इस लेक्चर में संभव नहीं है। इसके लिए तो हमें एक प्रॉपर आयुर्वेद कंसल्टेंट की आवश्यकता होती है, प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, प्रॉपर लेक्चर्स की आवश्यकता होती है। और मैं आपको यही कहूंगी कि होल फूड को, जो आपका जो प्लांट बेस्ड फूड है उसको यूज करना स्टार्ट करिए। फिजिकल एक्टिविटीज और गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट का उपाय जरूर करिए। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है कि जी योगा और मेडिटेशन कर लीजिए। मैं कहती हूँ कैसे कर लीजिए योगा और मेडिटेशन, एक व्यक्ति का मन ही नहीं करता, उसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो गया है,
मान लीजिए हाइपोथायराइड का व्यक्ति है या डायबिटीज मेलाइटिस का व्यक्ति है, उसका बॉडी इतने लिथार्जी हो जाती है, किसी चीज में उसका काम ही नहीं कर, मन नहीं करता, तो कैसे अपने आप को ना एक्सरसाइज करेगा, योगा मेडिटेशन करेगा? तो उसके लिए हमको उसको पहले प्रॉपर पाथ पर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल थ्योरी बताऊंगी। उसके लिए हमें ना एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। पिछले 8 सालों से मैं जिस डिजीज पर काम कर रही हूँ उसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे कि नाम से आपको पता चलता है कि यहाँ गले में थायराइड ग्लैंड होती है और उसका जो फंक्शन है वो लो हो जाता है। जैसे ही उसका सिक्रीशन लो होता है थायराइड ग्लैंड का, हमारे पूरी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म कहें या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारी एनर्जी लो हो जाती है। अगर आयुर्वेद के शब्दों में कहें, हमारी अग्नि कम हो जाती है। और फिर हमको क्या करना होता है कि बाहर से अल्ट्रोक्सिन या थायरोक्सिन हार्मोन लेना पड़ता है, और वो भी सुबह खाली पेट। अब सुबह खाली पेट का कंसेप्ट वही हुआ कि डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटा पहले, खाना खाने से पहले आपको ये थायरोक्सिन हार्मोन की टैबलेट लेनी है, उसके बाद ही आपको कुछ खाना है। क्यों? क्योंकि वो थायरोक्सिन हार्मोन आपके डाइजेस्टिव फायर को बर्न कर देता है और आपको फिर भूख लगती है, फिर आप खाइए तो जो भी आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी पूरी बॉडी को, पूरे बॉडी सिस्टम को अच्छे से वर्क करने के लिए एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। अब हम वो अल्ट्रोक्सिन लेने के लिए या वो थायरोक्सिन हार्मोन लेने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लाइफ लॉन्ग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी साइड इफेक्ट कर रही हो, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग जागने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि अर्ली इन द मॉर्निंग जागने से ही हमारे जो हार्मोन है वो रेगुलेट हो जाते हैं, हमारी जो बॉडी साइकिल है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाता है। तो हमारे ऐसे उपाय हाइपोथायराइड के व्यक्ति को करने चाहिए जिनसे अग्नि ठीक गुजर हो। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां कही हैं आयुर्वेद में, चाहे वो डाइजेस्टिव फायर हो या हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो भी अग्नि है। उसी के कारण हमारी जो स्किन का लस्टर होता है वो हमारी स्किन चमकदार दिखाई देती है। तो थायराइड के, हाइपोथायराइड के व्यक्ति में आप देखेंगे कि स्किन की चमक नहीं रहती है, स्किन बेजान हो जाती है। इसका कारण यही है क्योंकि अग्नि जो है वो लो हो गई है, उसकी एनर्जी लो हो गई है। और आप थायराइड के व्यक्ति को देखेंगे तो उसकी आईसाइट बहुत वीक होती है। क्यों? क्योंकि जो अग्नि है वो हमारे नेत्रों में भी होती है आयुर्वेद के हिसाब से। भाई नेत्र क्या है? जो आपको आंख दिखाई दे रही है वो सही में हमारी कोई आंख नहीं है, एक तरीके से ज्योति है। इसके अंदर एक ऑर्गन है आई के अंदर जो हमारा दीपक का काम करता है, और जैसे आप अंधेरे में दीपक से देखते हैं उसी की तरीके से हम हमारी आंख में स्थित ज्योति के माध्यम से हम अंधेरे में देख पाते हैं। ऐसे लीवर है, लीवर में भी हमारी अग्नि है। जो हम खाते हैं, जो हमारा फूड असिमिलेट होकर के लीवर में पहुंचता है, एब्जॉर्ब होकर के लीवर में पहुंचता है, वहाँ लीवर उस फूड को ब्लड में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो वहाँ जो अग्नि है वो भी प्रॉपर रहे तभी हमारा जो फूड है वो ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके के आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि है। एक सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूँ तो ये सारी अग्नियां जो है हाइपोथायराइड के व्यक्ति में लो हो जाती है, तो हमें वो सब काम करने चाहिए। यस यस मैम। Excuse me, ma'am. Ma'am, actually, we have a speaker left, and the time is quite low with us. So, would you like? I would really appreciate if you can go a bit faster. ओके मैम। Sure. ओके मैम। तो इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी, प्राणायाम, ये सब हमने आयुर्वेद के माध्यम से उन पेशेंट को दिया, हाइपोथायराइड के रोगियों को। तो हमें बहुत पेशेंट को फायदा मिला। और एक सिंपल सी चीज जो हमने उनको दी वो ब्राह्मी, आपने सुना होगा ब्राह्मी टैबलेट भी आती है, इसका कैप्सूल भी आती है, ये एक टॉनिक होता है जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है। तो हमने सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए
ये टैबलेट दी पेशेंट को, उसके बाद हमने प्राणायाम, ध्यान और योगा वगैरह करवाया, तो हमारे पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हुआ। और मैं तो आप सबको यही कहना चाहूँगी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट इन शॉर्ट, जैसा कि मैम ने मुझे कहा है कि मुझे बताना चाहिए कि हमें मन, वचन और कर्म, इन 3 चीजों में प्यूरिफिकेशन लाना चाहिए। मन को तो एकदम एनलाइटेड रखना चाहिए, बहुत ही लाइट मूड में रहना चाहिए हमेशा, और लाइट मूड में रहने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम सबसे बेस्ट तरीका है। और वचन जहां तक हो सके मधुर शब्दों का प्रयोग करें, बोलने में, लिखने में, और जो आपके फिजिकल बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी बहुत मधुरता होनी चाहिए। और जो आप कर्म करते हैं, राइट काइंड ऑफ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज करिए, तो मन, वचन, कर्म जो हमारी भगवत गीता भी हमको संदेश देती है, वो आज के समय में इसी प्रकार समझना होगा हमको। और आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हमें सात्विकता की ओर ले जाती है। हमारी जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी डेवलप करने का काम करती है, हमको एक एनलाइटनमेंट देती हैं। आप कभी भी देख लीजिए, जो लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन सेवन करते हैं, उनकी जो लास्ट स्टेज डेथ होती है बहुत ही स्मूथली होती है। आज तक मैंने ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जिसने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली हो और उसके बाद वो बहुत ही दर्दनाक मौत जिसको मिली हो। ये आज तक का मेरा 22 साल का आयुर्वेद की प्रैक्टिस का अनुभव रहा है। थैंक यू सो मच पीसी सर, कविता मैम, मानसी देशपांडे मैम, और जो हमारी सुषमा रावत मैम, सुचित्रा कुलकर्णी मैम, तनुजा नेसी मैम, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी ने मेरे वाक्यों को ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी को नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you very much, ma'am. We are highly delighted to listen your words. Last but not the least, please allow me to invite Dr. Tanuja Nesri, Director, AIMS, to share some values. Good evening, all speakers. I'm PS to Tanuja ma'am, and she's coming in a moment. Please थोड़ा सा wait कर लीजिए, ma'am is coming. She's arriving shortly. तब तक कोई क्वेश्चन हो किसी का, जो स्पीकर्स प्रेजेंट है उनसे, तो हम। यस मैम। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम एलोपैथी में देखते हैं कि मौत कितनी दर्दनाक होती है आईसीयू में, है ना। पेशेंट को बहुत सारी तकलीफों से गुजर के वो होता है। तो जो अभी हमारे कामिनी कौशल मैम ने बोला कि आयुर्वेद से हमारा जो शिफ्टिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड इज वेरी वेरी स्मूथ, वो मुझे आज नया सब्जेक्ट मिला और बहुत ही लाइक एवरीबडी वुड वांट कि उसके उस लास्ट डेज बहुत कंफर्टेबल हो। इनफैक्ट एवरीबडी प्रेज फॉर इट। तो उसके लिए हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ना लेके हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लाइक यू नो आयुर्वेदिक मेडिसिन ना लेके हम सिंपली क्या कर सकते हैं? कामिनी मैम। यस मैम। मैम, ये रावत मैम ने जो प्रश्न पूछा है, देखिए मैम, उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि आप जो ये बॉडी देख रहे हैं, ये सिंपली बॉडी नहीं है। बॉडी के अलावा मेरे अंदर एक मन भी है। जैसे मुझे खट्टा खाना अच्छा लगता है, मीठा खाना अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता है? मीन्स मेरे मन को, मेरे माइंड को। अब आप देखिए, मुझे खाना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं खाती हूँ तो कोई एक चीज सोचती है अपने अंदर से, अपने आप से, यानी मेरी बुद्धि, यानी शरीर अलग हुआ, मेरे अंदर एक मन है जिसे खट्टा खाना अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज है जो लगातार सोचती है, यानी इंटेलेक्ट।
फिर उसके बाद एक चीज और है जो एक ऐसा लगता है ना, मुझे हर समय, मुझे क्या हर किसी को लगता है कि कोई मुझे देख रहा है अंदर से। कौन है वो चीज? उसे मैं आत्मा कहूंगी, स्पिरिट कहूंगी, या मैं ये कहूंगी कि जब इंसान जिंदा नहीं रहता है तो बॉडी में से जो चीज निकल जाती है वो आत्मा है। तो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं रावत मैडम? आप देखिए, शरीर हुआ, मेरा मन हुआ, मेरा इंटेलेक्ट हुआ, ठीक है, और मेरे अंदर एक आत्मा है। फिर आपको एक चीज जो ऊपर नीचे मेरी ये बॉडी को कर रही है, ये श्वास हुई। यानी मैं आपको 5 चीजें तो समझाने में कामयाब हो रही हूँ ना। इन 5 चीजों को आप प्रॉपर फूड दीजिए। और इन 5 चीजों का फूड क्या है? अब जैसे शरीर के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, योगा करना है रोज। तो ये मेरा शरीर जो है, इसमें लचक आएगी अपने आप। ये जो अंदर के टॉक्सिन्स है उनको एलिमिनेट कर देगा, चाहे वो मेरी ब्रेथ के थ्रू करे, चाहे स्वेटिंग के थ्रू करे, चाहे मेरी यूरिन के थ्रू, चाहे स्टूल के थ्रू। मतलब एक हेल्दी बॉडी हो जाएगी। फिर जो मेरी आत्मा है, मतलब जिसके कारण मैं जिंदा हूँ, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और जो आपका मन है, जिसको खट्टा खाना पसंद होता है, मीठा खाना पसंद होता है, उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट, पिक्चर भी देखना चाहिए, टीवी सीरियल भी देखने चाहिए, जो भी आपको घूमना फिरना पसंद है वो करना चाहिए। और जो मेरी बुद्धि है, उसकी अगर आप शुद्धि, उसका फूड चाहिए होता है तो हमें स्टडी करना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। और जो मेरी श्वास है, उसको मैं प्राणायाम के थ्रू प्यूरिफाई कर सकते हो। तो ये जो हमारे शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि और श्वास है, इन 5 चीजों को अगर आप प्यूरिफाई कर पाए तो आप बिल्कुल स्मूथ लाइफ स्टाइल जिएंगे। और लास्ट मोमेंट पर आप बहुत अच्छी मतलब इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह करके जा पाएंगे। और ये आजकल हमारे जो स्पिरिचुअल आचार्य हैं वो क्या कर रहे हैं? यही तो दे रहे हैं हमको, सिर्फ हम समझा नहीं पाते। वो हमको कहते हैं कृपा हो जाएगी, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम समझे तो हमारे अंदर की ये 5 चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम अच्छे से लाइफ को लीड कर पाते हैं। और मैं इसलिए बताने में आपको सब सफल हो पा रही हूँ क्योंकि ये 5 चीजें मैंने अपने अंदर महसूस की हैं। और बहुत छोटी उम्र में ही मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज, मुझे एक भूख सी लगती थी कि मैंने ये कर लिया, योगा कर लिया, मैंने प्राणायाम कर लिया, फिर भी खालीपन है, क्यों? तो लगातार मैं सर्च करती रहती थी। तो मुझे ये 5 चीजें प्रैक्टिकली फायदेमंद लगी, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। बहुत बढ़िया। बताइए, कोई ऐसी स्टडी अवेलेबल है क्या जिससे कंपैरिजन हो सके? फॉर एग्जांपल, ऐसे लोग जो थ्रू आउट लाइफ सिर्फ एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेते रहे, दूसरी कैटेगरी उनकी जो थ्रू आउट लाइफ सिर्फ आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट लेते रहे, तीसरी कैटेगरी वो जो थ्रू आउट लाइफ यूनानी ट्रीटमेंट लेते रहे, चौथी वो जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते रहे थ्रू आउट लाइफ। क्या उनके केस में लाइफ स्पैन में कोई अंतर है? क्या उनके केस में डिजीज प्रोफाइल में कोई अंतर है, या कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसी कोई स्टडी है? सर स्टडी नहीं है, पर मेरा अपना अनुभव है। मैं आपकी ये बात को मानती हूँ और मुझे ये सर्वे करवाना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए प्रिंसिपल अब मैं इस कैपेसिटी में हूँ कि मैं ये स्टडी करवा सकती हूँ। तो ये स्टडी आप हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके करिए और लेट अस फाइंड आउट कि जिन्होंने कभी आयुर्वेदा के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, एक कैटेगरी वो। दूसरी कैटेगरी वो जिन्होंने एलोपैथी के अलावा कभी और कोई सिस्टम नहीं किया, यूज नहीं किया। तीसरी वो जिन्होंने सिर्फ होम्योपैथी की। चौथी वो जिन्होंने ओनली यूनानी ट्रीटमेंट लिया। तो इस तरह के 4 कैटेगरीज के जो पेशेंट्स हैं या लोग हैं, do they differ in their disease profile? Do they differ in terms of the lifespan? या कोई फर्क नहीं? Let us do the research and see, does research have to give something new to us? तो ये तय रहा, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ हम एक स्टडी कर लेते हैं and let us find out. We don't know because कोई as आपने कहा कोई स्टडी अवेलेबल है नहीं ऐसी. It can be an original work. जी सर, ये मैंने नोट डाउन कर लिया है और रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स
और आपका ये जो प्रपोजल है बहुत अच्छा और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं नियर फ्यूचर में आपसे करस्पॉन्डेंस भी करूंगी कि हम इस स्टडी को आगे कैसे प्लेटफॉर्म पर लाएं। जी जी सर, जी। मेरा अपना अनुभव तो है इस मामले में कि एक बार मैं यूएसए गई थी, तो वहां पर मेरी जो पेशेंट है उनको जब जब मैंने मेडिसिन दी, उनको एडवाइस किया आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो वो मिनरल वाटर से मेडिसिन लेते थे और ऑलवेज है ना मुझे कहती थी कि मैं मिनरल वाटर से जब मेडिसिन लेती हूँ तो मुझे बहुत इफेक्ट करती है, जब मैं टेप वाटर से लेती हूँ तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती। और वहां पर जो पेशेंट एक एक दो दो साल लगातार मेडिसिन लेते रहते हैं, क्योंकि वहां जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है बहुत कॉस्टली होता है, तो वो लोग मॉडर्न मेडिसिन का हेल्थ इंश्योरेंस ना लेकर के वो आयुर्वेदिक जो हर्ब्स हैं उनको लेना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जस्ट पार्ट ऑफ फूड, वो उसको यूज करते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर हमने उनको बता दिया कि शतावरी पाउडर फीमेल के लिए जो है नेचुरल हार्मोन, फीमेल हार्मोन का काम करेगी, तो वो 1 टीस्पून मॉर्निंग, 1 टीस्पून इन द इवनिंग, और वो होल ईयर उसको लेते रहते हैं। और हमारे यहाँ 8 से 10 दिन लेने के बाद ही पेशेंट फेड अप हो जाता है। तो आप ये देखिए जो माइंड सेट है वो माइंड सेट बहुत जरूरी होता है। मतलब श्रद्धा, जो व्यक्ति जिस पैथी में श्रद्धा रखता है वो पैथी 100% उसको फायदा करती है, चाहे आप माइंड वर्क्स, वो तो बात सही है, वो तो एस्टेब्लिश बात है, लेकिन एक डिस्टिंक्शन देखने की जरूरत है। जी सर, ये हमारी है ना डेटा एंट्री और डेटा बेस्ड स्टडी होनी ही चाहिए, और हम ये जरूर कर लेंगे आपके साथ। और इस चीज के लिए तो लोग अब तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ स्पान जो है वो मोस्टली मैंने देखा है कि वैद्य पुराना भला और डॉक्टर नया भला, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वैद्य जितना पुराना होता जाता है वो बैठे बैठे सोचता रहता है कि अच्छा ये दवाई कैसे काम करती है, कैसे काम करती है। लेकिन सर ये मेरा अपना अनुभव रहा है कि हम अभी तक आयुर्वेद को किसी लेबोरेटरी में प्रूव नहीं कर सकते। ये हमारी ह्यूमन बॉडी एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। आज मान लीजिए विश्व युद्ध हो जाता है, सारी लेबोरेटरी खत्म हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, लेकिन एक वैद्य जो पल्स डायग्नोसिस करके आपका सारा बॉडी का हाल बता देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बॉडी को एक लेबोरेटरी की तरह डेवलप कर लिया है। तो ये जो साइंस था वो इंडिया में इसीलिए विकसित हो सका क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से जानते थे, हम मशीनरीज पर डिपेंड नहीं रहे। अब चूंकि साइंस का युग है, हम मशीनरीज के थ्रू जाएंगे, ऐसा नहीं है, मैं मशीनरीज को डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन एक अनगिनत पावर जो हमारी बॉडी में है उसको मैं खोल करके दिखा दूं, ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो नो डाउट आयुर्वेद हो चाहे यूनानी हो, इसको सेवन करने वाले लाइफ लॉन्ग तो जीते ही हैं। हकीम जी भी बहुत जीते हुए मैंने देखे हैं, और वैद्य भी बहुत लंबी आयु जीते हैं, और डॉक्टर्स तो पिल्स लेकर के जीते हैं, वो तो मुझे पता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बट इट नीड्स टू बी सीन दैट। अब सर इसमें क्या होगा कि ये स्टडी बायस्ड हो सकती है, तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, कोई ना कोई मेजरमेंट पैमाना लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्टडी बायस्ड हो जाएगी। एग्जैक्टली, इट हैज टू बी अनबायस्ड, तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो मतलब नहीं। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि आपकी यहाँ की जो बेस्ट फैकल्टी हो, जो हमें साइंटिफिक आउटपुट दे सकती हो। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट जो है, एलोपैथी में कंटिन्यूअसली थ्रू आउट वर्ल्ड रिसर्चेस होती रहती है और नई चीजें आती है, लेकिन आयुर्वेदा में हम सिर्फ वही बात कह रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं, बट व्हाट आफ्टर दैट है वी, क्या हम कोई नई चीजें बता पाए, नई चीजें खोज पाए बेस्ड ऑन फाउंडेशन, उसको मान के कुछ नए इलाज, नए ट्रीटमेंट्स, नए तरीके डायग्नोसिस के खोज पाए हैं आयुर्वेद में? सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये जो साइंस था वो इंडिया में इसीलिए विकसित हो सका क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से जानते थे। हम मशीनरीज पर डिपेंड नहीं रहे। अब चूंकि साइंस का युग है,
सर आप ये देखिए, हमारे यहाँ 500 आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएटेड कॉलेज हैं, जिसमें हर साल लगभग 5000 थीसिस लिखी जाती है। तो आप सोचिए, वो थीसिस हमारी पब्लिश नहीं हो पाती हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ नहीं पाती हैं। उसका जो कारण जो मैं समझती हूँ, वो एक अवेयरनेस की कमी है। वो अगर पब्लिश होने लग जाए तो काम हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन वो जर्नल पब्लिक में डोमेन में नहीं आ पाते। ये सबसे बड़ा जो कारण है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब जैसे ये हमने ये थीसिस लिखवाई है, ऐसी मैं कई थीसिस लिखवा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं जैसे इंसान इतना बिजी होता जाता है कि उसको फॉलो अप पीछे करने वाला नहीं मिलता। आयुर्वेदा में रिसर्च जर्नल्स इंडिया में पब्लिश नहीं होते आयुर्वेदा, होते हैं सर, तो हो उसके सकती। थ्रू प्रोपेगेट हो सकता है। हाँ सर, अभी स्टार्ट किया है हम लोगों ने, और अब तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और सब कंपलसरी कर दिया है। अभी पिछले 2 साल से तो एकदम बूम आया है, और नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टडीज सामने आएंगी आपकी। लेकिन बात वही है, फिर मैं आपको कहूंगी कि अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी बॉडी में 7 सिस्टम्स होते हैं, तो मैं आपको समझा पाऊंगी कि हाँ, ये आप जो हमारा मस्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं, इसके अंदर जो ब्लड है और जो फ्लूइड है तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर आप जो अपना स्केलेटल सिस्टम है वो देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने शब्दों का हेरफेर कर दिया। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, लास्ट में आकर के जो जहां पर हमारा जन्म होता है, मीन्स सीमन, या में कहे ओवा, तो वहां ला करके एंड कर दिया है कि हमारी बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई। हमारी बॉडी हुई कि फूड खाने से जो हमारा फ्लूइड बना, मीन्स रस बना, उस रस से कन्वर्ट होके रक्त बना, मीन्स ब्लड बना, ब्लड बनने के बाद रस, रक्त, मांस, मांस बना, मीन्स मसल्स बनी। उसकी मसल्स किससे जुड़ी हुई हैं? इस फैट से जुड़ी हुई हैं। स्केलेटल सिस्टम से कैसे जुड़ेंगी? बिना फैट के तो नहीं जुड़ेंगी ना। तो रस, रक्त, मांस, मेद, मेद मीन्स फैट। अब वो मेद से जुड़ करके किसके साथ जुड़ी? अस्थि। अस्थि के अंदर क्या भरा हुआ है? बोन मेरो, मीन्स मज्जा। और जब जिन लोगों की बोन मेरो अच्छी होती है, अस्थियां अच्छी होती है, उनका सीमेन, उनका उवा बहुत अच्छा होता है, मीन्स उनके आगे की संतति अच्छी बनती है, मीन्स शुक्र। तो आयुर्वेद वही कह रहा है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। That's correct, but then we need to promote it. That is what is required. तो ये प्रमोट करना पड़ेगा। अक्सर होता क्या है कि कहीं इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है, कहीं अभी जो गवर्नमेंट भी प्रोपेगेट कर रही है, मोटिवेट कर रही है आयुर्वेदिक स्कॉलर्स को, तो वो भी आगे आ रहे हैं। एक ये हमारा सबसे बड़ा लैकुना ये होता है कि हमको ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो अनवांटेड होते हैं आयुर्वेद के लिए। देखिए, मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, जब आयुर्वेद में संस्कृत का स्कॉलर आता था तो अपने आप को प्राउड फील करता था, क्योंकि उसके लिए और कोई रास्ता नहीं होता था। उसको लगता था कि मैं एक डॉक्टर बनाऊं, मैं एक चिकित्सक बनाऊं, तो मेरे लिए प्राउड की बात है। वो चाहे संस्कृत में कुछ भी करता हो, चाहे शब्दों का ही निचोड़ निकालता हो, वो स्कॉलर चाहे एनालिसिस ही करता हो, कुछ तो करता था। आज साइंस का स्कॉलर आता है, वो हाफ हार्टेडली आता है और कहता है कि मुझे तो मॉडर्न डॉक्टर बनना था, मुझे वो नहीं मिला तो मैं आयुर्वेद में आ गया। उसमें आधे स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, और वो हमारे लिए यूजलेस होते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि आयुर्वेद में वही लोग आए जो इसको अपना समय दे सके, अपना जीवन दे सके, और ये इतना ब्यूटीफुल तभी पॉसिबल है ना, जब हम इस सिस्टम को अट्रैक्टिव बनाएं तभी हो पाएगा। अट्रैक्टिव। हाँ, तो फिर सर आप देखिए ना, वही स्कॉलर आगे चल के टीचर भी बनते हैं, वही चिकित्सक भी बनते हैं। तो कहाँ से ग्लैमर आएगा, कहाँ से मोटिवेशन आएगा? तो सेल्फ मोटिवेटेड लोग ही नहीं पनप पाते, तो इसलिए पुअर रह जाता है। सिस्टम बुरा नहीं है, सिस्टम बुरा होता तो 5000 साल से ये सर्वाइव ही नहीं करता। आज मैं सर ये कॉपी लिख रही हूँ, ये 2 दिन कोई नहीं पढ़ेगा, तीसरे दिन ये फट जाएगी और रद्दी में बिक जाएगी, क्योंकि यूजलेस है। लेकिन आयुर्वेद की जो लिटरेचर है 5000 साल से पढ़ा जा रहा है, रखा जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो वर्थवाइल है इसमें।
Thank you, ma'am. Tanuja ma'am has joined us. No, thank you so Yes, much, ma'am. Tanuja ma'am. Thank you. Kamini ma'am. Yeah. Namaste. Namaste to everyone. Hey, ma'am. And at the outset, I would like to congratulate the organizer, Sri Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalay, for organizing, which is a center for women's studies, and organizing through Center for Women's Studies, organizing national colloquium on role of Ayurveda in treating lifestyle disorder. And for that, I would like to congratulate and thank Honorable Vice Chancellor Dr. Upendra Dharji, and also Dr. Kavita Sharma, Professor, Department of Chemistry and Head Center of Women Studies, and all the esteemed panelists, co-panelists who have shared their valuable knowledge, including Dr. Kamini Kaushal, Dr. Sushma Rawat, Vaidya Suchitra Kulkarni, and my friend and colleague Dr. Mansi Deshpande, and all the esteemed members who have joined in this webinar. At the outset, I would like to congratulate and thank for giving me such a wonderful opportunity to interact on the women's health, and also the role of Ayurveda in lifestyle disorders. I just start from the point which Dr. Upendra Dharji had asked Kamini Kaushalji also. So the Ayurveda is knowledge system. It is not only the science of healthy and happy life, but it is the knowledge system of healthy and happy life. So when we say that the knowledge system, that means that there are the yardsticks which are beyond the yardsticks of the conventional scientific tools. Because why I mean to say that, because Ayurveda is the it is mentioned that Sattvam Atma Shariram Trayam Etam Tridandavat. So when the health is an outcome of the harmony between the mind, body and soul, that is a harmony within ourselves and harmony with the outside environment and the universal. My friend was showing the picture of the biological clock, and when we have the harmony with the universal clock, the outcome is the health. So when it includes physical, mental, spiritual and the social. To understand the physical health, we have the yardsticks, the outcome measure, biodynamic tools of investigation, which include radiology, CT, MRI, biochemistry, and everything. But for the understanding of the mental and the spiritual dimensions, which leads to the health, the harmony of the consciousness with the mind, and also the social harmony, no yardsticks have yet to be evolved. And that does not mean that the evidence of the absence of evidence is not the evidence of absence. I again mean to say that if there is an absence of evidence because the scientific tools are not yet established to understand what is the spiritual domain and how we create the harmony that leads to the happiness. So that no tool has yet evolved which measures the catecholamines, happy hormones. That is the only one part. It is the tip of the iceberg. The iceberg is yet to be evolved and understand. So that means what is the outcome we understand for last 5,000 years, which is beyond the science. It is a knowledge system which is established in this continent. It is an indigenous system of this India that we are living. It is the living culture that we are experiencing, and that is the knowledge system of healthy and happy life. What is the strength of this system is it leads for other medical systems. The journey starts from illness and leads to the wellness, because this conference itself is for lifestyle disorders. So it leads the journey from illness to wellness. But when we understand the Ayurveda in its true spirit, the journey starts from illness to wellness, but it does not stop there. It leads to the happiness. So the happiness is the thing which one has to experience. Is there any happiness index? Is there any major
one can tell us what the happiness is. For everyone, it is different, but that makes you, and that really helps you in establishing harmony with the society, with the community, with the environment, with within yourself. And that's the true outcome and the goal of the Ayurveda. And that's why it is a preventive, promotive, 5P medicines. It is a promotive, preventive, participatory, because, and also predictive also, and personalized also, because it is a tailor-made. Everyone sitting here has a different constitution, different prakriti. So the diet, lifestyle, thought process, and the module what we uh, give to everyone for being a healthy and happy would be different, which is customized, tailor-made to your own constitution, to your own, which is true to your own ecosystem. So it is a personalized. It is a promotive. Why? Because my friend mentioned about Bruhat, like a Trayopastamba, Ahara, Nidra, and Brahmacharya. That is a diet, lifestyle. Brahma, that is Aham Brahmasmi. So it is not only what we can say the control, celibacy, or the sex, but it is Brahma, that is Aham, myself. And Charya means routine. So my own lifestyle and the routine. So it is diet, lifestyle, and the sleep, work-life balance. So that makes the health in its true sense health promotive. And swastha is a definition itself is a samadoshaha samagdishya samadhatu malakriya prasanna atma indriya mana. That means it is a physical, mental, spiritual, and the social harmony, and not merely an absence of disease. And that's what for thousands of years Ayurveda has mentioned. WHO has recently accepted this holistic concept of the health and holistic well-being as a sustainable SDG target as well, which Ayurveda practices, preaches as a promotion, swasthasya swasthya rakshanam, promotion of a true health in its own sense, promote it. How do we promote it? With the diet, lifestyle, and the uh, following the sleep pattern. And how do we do it? It is only rule of 8. 8 3s are 24. That means if we want to really create the ecosystem and the biological clock in harmony with the universal clock, 8 hours professional time, 4 hours morning and 4 hours evening, your own diet, lifestyle, exercise, yoga, recreation to your for you, for your family, society, community, and then 8 hours very good sleep, rest. So if you follow this, it is a work-life balance, and this is the health promotion and the maintenance. How do we prevent the diseases? Just follow code of conduct, dinacharya, rutucharya, seasonal regimen, daily regimen. You will definitely avoid, because you are trying to live in harmony, in the sustainable living with close to the nature. That's what the world environment take. And one health aspect that take care of your environment, take care of the plant, animals, ecosystem, they will take care of you. Make everyone happy, you will become happy. Make everyone healthy, you will become healthy. So this is a prevention. And the other, during COVID pandemic, what we could understand is my health is my responsibility. During COVID time, when the health supplements, whatever everyone was taking, did the health could bought, did anyone could buy, did anyone could buy the health from one pill pharmacy shop? There were no health pills. But the one who could really follow good diet, good lifestyle, those who really earn the health through the principles of Ayurveda, as a dinacharya, rutucharya, seasonal regimen, health supplements, rasayan therapy, rejuvenance, everything. So if we understand the health regimen, I think that was the one who really could take care of themselves for others, and they could prevent the infection. So COVID has taught us this mantra that my health is my responsibility and everyone should follow. Ayurveda is not nothing different. That is, we just understand the scientific understanding through these medical schools, but Ayurveda is the way of living and leading healthy and happy lifestyle. What you are leading, what I am leading,
what our dadima, nanima and our tradition was using. So it is imbibed in our culture, and that cultural, we have to touch the roots of our tradition, culture. We have to revive it again. We have to understand the scientific, follow it. Someone asked me, what is a good diet I should follow? Whether uh, the barley is good for me. What is the new age mantra for living healthy lifestyle? So I tell them, what your dadima, nanima, forefathers were taking, follow that diet, follow that lifestyle, you will be healthy. That is a personalized, and for being a healthy, just preventing all lifestyles, including diabetes, coronary heart disease, hypertension, mental diseases, and whatnot, degenerative disorders, you have to touch your tradition. Junk food avoid. Why we should say avoid? We should start good practices. Tell them everyone should follow our traditional system back, touch our tradition. What the rural India, what our tradition was taking, we're using, now using, try follow it again. That is the organic, that is the way of, and that nothing, Ayurveda does not tell anything differently. Because even our rituals, what rituals we follow, 2 days back, even for the Raksha Bandhan, we use coconut. So everything is for Vata Shamana. So every ritual, all the festivals, that really is the representation for following seasonal regimen that takes care of 3 doshas that downregulate and balance our ecosystem, our entire internal system with the external environment. So creating the harmony, changing the little tweaks in our daily routine, because we don't, even North India, they don't use sarso ka tel 24/7, 12 months. And depending on the different ecosystem, northern it is a mustard oil, southern it is coconut oil, in the central Maharashtra, central state it is the groundnut oil. So depending on the climate and the ecosystem, we adjust our body which suits to the, and which brings the harmony and the balance. I think if we revive that, that is the best way of prevention of the lifestyle disorder. Now, what for the ladies, for the especially the Nari Shakti, because this is a woman empowerment, I must tell that we have to take care of physical health, and it is our own responsibility, because it is the participation we have to have. And जो खुद की रक्षा करता है वही दूसरों की रक्षा कर सकता है. If we really want to become the health ambassador, we have to first of all be healthy, happy, and the fit, so that let us be the role model for others they follow. And for that, the exercise, yoga, meditation, keep some time for your own self, and then only you will be able to take care of the others in your family and in the system. So that is one thing. Most importantly, क्योंकि एक माता पूरी संस्कृति को बना सकती है, घर को बना सकती है, and there is, it is said that for every successful man there is a woman behind. Why? Because your mental health is very very important. तो हमारी माइंड, बॉडी और सोल, और जो 3 लाइफ चेंजेस आते हैं बदलाव में, जैसे एडोलेसेंट एज है, फिर वो चाइल्ड बियरिंग एज है, एंड मेनोपॉज, जिसमें हम हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे डिफरेंट इकोसिस्टम है, सोसाइटी के कंपल्शंस हो, बिकॉज न्यू एज वुमन इज नॉट अ सुपर वुमन. वो मल्टीटास्किंग हो गई, उसका ओरिजिनल टास्क कुकिंग का वैसे रह गया, ऑफिस का भी टास्क उसको एड ऑन हो गए, तो वो मल्टीटास्किंग हो गई है. बट इन दैट वी रियली हैव टू सी दैट डोंट ट्राई टू बी अ सुपर वुमन. टेक केयर ऑफ योर माइंड, अपने आप रिलैक्सेशन के लिए समय दीजिए, सो दैट स्ट्रेस लेना भी नहीं, स्ट्रेस देना भी नहीं. ऐसा करेंगे तो आई थिंक आपकी फैमिली सिस्टम, वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द प्रोफेशन will definitely remain healthy and stress free. That is the mantra we have to follow. Happiness के लिए, relaxation के लिए, recreation के लिए हमें करना चाहिए.
And at All India Institute of Ayurveda, what we have followed, I just want to share only in 2 minutes that during COVID time, we had care with compassion. That COVID Health Center, the tagline itself was care with compassion. What we did, we offered holistic and integrated solution. हमने होलिस्टिक आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड वे से हमने जितने भी एडमिट पेशेंट हैं 99.99% पेशेंट्स आर कंप्लीटली क्योर्ड, जिसमें डाइट, लाइफस्टाइल, रिक्रिएशन, मेडिटेशन, आयुर्वेदिक इंटरवेंशन एंड योग को भी ऐड किया. इन सब को हमने प्री और पोस्ट जो कन्वेंशनल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो आउटकम मेजर्स यार्डस्टिक है, HB, HRCT है, CRP लेवल्स है, डी डाइमर है, कोविड टेस्टिंग है, वो सभी पॉजिटिव के निगेटिव सभी का रिकॉर्ड हमारे पास है. आई मीन टू से दैट ईच एंड एवरी पेशेंट वाज क्योर्ड. सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से भी ज्यादा कोविड ने हमें ये समझाया कि वो इक्वली कम्युनिकेबल डिसीजेस में भी हमारी जो होलिस्टिक सॉल्यूशन है वो इफेक्टिव. नाउ कमिंग टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हैज 30 specialty units, which is a tertiary care hospital and translational research. So what we are trying to do, जो practice based evidence को हमने evidence based practice भी करते हैं. हमारे स्पेशलिटी यूनिट में हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं, केस के डॉक्यूमेंट करते हैं, और HMIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है. ईच एंड एवरी पेशेंट को हम प्री और पोस्ट जो कन्वेंशनल मेजर्स है उससे डायग्नोस्टिक टेस्ट सभी कन्वेंशनल करते हैं, बीच में होलिस्टिक आयुर्वेद सॉल्यूशन देते हैं जिसमें पंचकर्मा, शोधन, शमन, रसायन, डाइट, लाइफस्टाइल, योग, रिक्रिएशन सभी को जोड़ के प्री और पोस्ट एलोपैथी टेस्ट करते हैं. ऐसा एक एग्जांपल दूं तो डायबिटीज के जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ 41,000 पेशेंट्स, which each record for pre and post HbA1c, fasting PP, blood sugar, glucose, lipids, LFT and everything. And I can confidently say that कौन से मेडिसिन से 11 का HbA1c 6 पे आ जाता है एंड कितने महीने में आता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस, और कोई भी दुनिया की ताकत उसको मना नहीं कर सकती, because we have the outcome measures which are ready to accept. The second way, through our translational research, जैसे कोविड में हमने 80,000 दिल्ली पुलिस को आयु रक्षा किट दिया जो एडवाइजरी थी मिनिस्ट्री की, एंड वी जस्ट असेस देयर इम्यून स्टेटस. हमने केवल पब्लिक हेल्थ मेजर नहीं किया. What we did, we roped in Public Health Foundation of India. So public health research we did. And what was the query of Dr. Upendra Dharji was that we just assess their immune status, quality of life through SF36. And I'm really happy that जिनको जिस ग्रुप ने आयु रक्षा किट दिया उनके प्रिवेंशन का परसेंटेज कम था, टाइम टू निगेटिविटी कम रहा, मॉर्टेलिटी हुई नहीं. 22%, 80,000 में से ओनली 22 का सिविरिटी और मॉर्टेलिटी हुआ. एंड दिस जिनको कोविड एंटीबॉडीज ओनली 17% रही, जिन्होंने नहीं लिया उसमें 54% कोविड एंटीबॉडी हुई. दैट मीन्स इट रियली प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन. एंड व्हाट यू वेर आस्किंग अबाउट द publication, so the recently this paper of prevention of Ayu Raksha kit in the healthy population in the Delhi police has been published in the Frontiers of Public Health, which has the impact factor of 6.1. So we have the peer reviewed journal Ayu Care, that is Ayurveda Care, is a Medno UGC Care listed journal which we publish all the success stories, case reports, and we have international journal of integrated research as well. So we have the UGC Care listed journals, we have the peer review system, our 150 studies are CTRI registered, we follow the robust scientific rigor
to conduct the clinical studies, we have the group which has the gold standard from case series to double-blind controlled clinical study to meta-analysis and the scoping review. Everything we do as per the scientific understanding of this community. That's what the translational research means. But the only thing is, even though principles are shashwat, the application should be relevant to the time. So, maintaining the sanctity of our own science, we have to adopt it, the technology which the entire world understands. We have to translate our own science into the language which the entire scientists understand, for which we are committed to do. And lastly, I must say that if we follow Ayurveda in its totality, there is a lot of strength in prevention, promotion, and treatment and rejuvenation, and also preventing the lifestyle disorders and bringing down the per capita expenditure on this health for the society and for the nations. And it's great gift to the humanity. Thank you very much for patient listening and understanding. Thank you, sir. Very much, ma'am. We are really honored to have you here. Now, I would like to invite Preeti Tambat ma'am to share her words. Thank you very much, madam. I think this was very informative that already some research journals are also available. We do not have Ayurveda in our university, but we have forensic science. Can some study be jointly done in the area of forensic science with Ayurveda, say Ayurvedic approach to forensic science? So far, say forensic science is dominated by chemistry. And that too, the researches that have been done in the West. There is no Indian intervention in it. But can we work on Ayurveda and how Ayurveda can help in identifying the problems and then resolving? It's a very relevant question because Ayurveda, Ashtanga Ayurveda, Kaya, Bala, Graha, Dvanga, Shalya, Danstra, Jara, Vishan. So one branch entirely deals with toxicology and the forensic, and not only now, but since ages together, Ayurveda is divided into eight branches, and one branch is specifically for toxicology and Vyavahar Ayurveda, that is a forensic. It is not that the Chanakya Niti that tells about the Vishakanya, but there are certain classical texts like there are texts which tells about how we prevent and how we really induce the poisons even in the human beings during the earlier period. In the political science also, this was that there is one classical text called as Hakmat Hikmat Prakash, which specifically how we do endorse the five poisons, and we identify and that is forensic science. And one basic which has in the graduation EMS program, there is a one specific department and the branch called as Agata Tantra and Vyavahara Ayurveda that specifically deals with the forensic science and everything related to the principal theory and the practices, and the research is being taught, mentioned, and there is a post-graduation and there is a PhD program for that as well. Yeah, excellent. We have Professor Gautam, who has been Yes, career sir, forensic scientist. Yes, Gautam sir, do we have yes, any intervention like that? yes, I would like to say something. Madam, I am very much pleased to listen that you are also having the instruments. The basic problem with the forensic science is this: we are not getting instruments related to identification of poisonous plants, because the Ayurveda is just related to the poisonous plants. Okay, suppose we go for the identification of the active principles as such plant, and after metabolize the plants up in the Bishra. So we are having these standard samples of the plants, this plant constituents, but we are not getting their metabolites for the comparison purpose. So this is the basic problem.
with this. Now, second thing is we have also worked on the mind altering plants. Means the plants which are having the narcotic effect. Suppose opium is there, cannabis is there, cactus is there. There are a number of plants which are affecting the mind. So, if there is any possibility with the correlation of the Vaishnav Vidyapith and your institute, we shall be very happy to collaborate the research work, because we are having some talent. There are a number of students are working on the poisonous plant. I have also written one book on the analysis of plant poison. But the problem is this: we are not getting the metabolite. So if you can help in this, and third one is the standard samples of the narcotic drugs. Suppose we are getting this narcotic plants for the identification, then the THC9 can be available, but their metabolites are very difficult to get. Similar case with the this brown sugar, urine, smack, and other types of narcotic drugs. So if in your department, as you are mentioning that there is a special department for poisoning identification related to the plant, then this collaboration can be done with this university. And I am very much pleased to listen that our Dr. Upender Dasa Vice Chancellor is very much interested in this field. So please help us in this matter, so we can have you MOU with your department. Professor Gautam, you have to get in touch with her and see what best can be done. Okay, and together, okay, both institutions can do some good work. Okay, madam, I will make a connection with you. No? Sure, there is a Schedule E as in the Drug and Cosmetic Act. The Schedule E deals with the poisonous plant, and in Ayurveda there is a Visha and Upavisha Varga. So all the narcotic plants, including cannabis and the opium. And But narcotic plants comes under NDPS Act 1985, and this cosmetic drug and cosmetic has some other plant. Yeah. So we have the methods. There may be some studies also going on cannabinoids and the CBD, and we have the methods for the Shodhana. And there are various methods. Maybe we can work separately. One more thing I could not mention it. The taxonomical studies of the plant powder. Because in crime scene investigation, because I was in the forensic laboratory for about 36 years, and there are so many cases in which the police has seized the powder which they have taken. So to identify the phytochemicals, it is a very simple thing. It can be done, but that phytoconstituent can be available in another plant also. So as far as the species identification is required, then their taxonomical or further studies are needed. So if this can also be, because it is a common practice in the Ayurveda, they are also doing the powder microscopy, microscopic and macroscopic. So in this field also we would like to get help from your institute. Sure, because the pharmacopoeial standards we have, which includes identity, purity, and the strength. And we have the standards, qualitative and the quantitative standards, and the assay for all the medicinal plants, more than 560 milligrams are already there. So maybe we can, whatever is the query, that can be addressed very well. Also, as directed by our Honorable Vice Chancellor, I will consult you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, madam. I would like to invite Dr. Over to Master of Ceremonies. Yes, Karta, you have something. Hello. Yeah, please start. हेलो Yes, ma'am, you are. अच्छा मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सबको मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रीति तांबट इंदौर से बोल रही हूँ। शुभदीप आयुर्वेद में मैं स्वस्थ की प्रोफेसर हूँ और मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है रावण आयुर्विद्या नाम से। तो इसमें मैं 6 साल से सिर्फ लाइफस्टाइल के ऊपर ही काम कर रही हूँ। और अभी जैसे हमारा पूरा डिस्कशन हुआ तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद ये सिर्फ एक ट्रीट करने का जरिया नहीं है या एक पैथी नहीं है,
डिसीज ट्रीट करने के लिए या डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए, दैट इज द लास्ट पार्ट इन आयुर्वेदा टू ट्रीट एनी डिसीज और टू ट्रीट एनी डिसऑर्डर। कि शुरुआत में जैसे धार सर ने बोला था कि हम ऐसे कुछ देखना चाहिए कि आयुर्वेद पूरा कौन फॉलो, कितने फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग पूरा एलोपैथ फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग पूरा होम्योपैथी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एलोपैथी में, होम्योपैथी में, यूनानी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे कि जो लाइफस्टाइल आयुर्वेदिक फॉलो करते हैं और ट्रीटमेंट होम्योपैथी या एलोपैथी या यूनानी लेते हैं। आयुर्वेद इज नॉट जस्ट काढ़ा चूरन पूरी, इट इज कि आप सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं, सूर्य को जो पानी चढ़ाते हैं, वहां से आपका दिन शुरू होता है और उसी को हम आयुर्वेद बोलते हैं। और वैष्णव विद्यापीठ से मेरी एक रिक्वेस्ट थी, हम्बल रिक्वेस्ट थी, आयुर्वेद जो पिछड़ रहा है वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद को एक टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से। बहुत कम जगह है जहाँ पे रिसर्च सेंटर्स है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट एलोपैथी को मिला और जिसके कारण उनकी बड़ी बड़ी मशीन आज मार्केट में है, हॉस्पिटल्स में है। आयुर्वेद के लिए किस तरह का सपोर्ट? जैसे टेक्निकल सपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं। जैसे आज आयुर्वेद के लिए मार्केट में सिर्फ एक आयु सॉफ्ट करके सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्रकृति समझ में आती, और एक नाड़ी तरंगिणी करके नाड़ी देखने का एक सॉफ्टवेयर है। ये दो ही चीजें आज मार्केट में है। लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की मदद मिल सकती है, अगर हमको फिजिक्स वालों की मदद मिल सकती है, I would invite you to the campus. आप कैंपस में आइए, we will discuss and we will see what best we can do. We will be happy to help. बिल्कुल सर, अगर कि कोविड के ऊपर भी जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो एक्चुअल, जैसे गोमूत्र की अगर मैं सिंपल बात करूं तो गोमूत्र से जो स्पाइक्स कटे जाते हैं कोरोना वायरस के, तो लेकिन वो हम शो कैसे करें, कहाँ पे करें? वो एक टेक्निकल लैब हमारे पास आयुर्वेदिक वालों के पास बहुत कमी है। और दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर, क्योंकि वैष्णव इंस्टीट्यूट आप कभी, क्योंकि आप इंदौर में ही है, आप कैंपस पे आइए, we will discuss and see what best we can do. जी सर, मैनेज करेंगे हम जरूर मैडम को बुलाना। आई हैव टॉक्ड टू हर पर्सनली yesterday. Sure, we'll call her. चलिए नेक्स्ट पड़ाव पे चलिए। Thank you, ma'am. Now let me welcome Dr. Shilpa Fitness, Coordinator Tejaswini 2, to propose her words of thanks. शिल्पा मैम, कविता आप कर लीजिए वोट ऑफ थैंक्स। Propose हेलो the. साक्षी। Yes, ma'am. Actually, she's having some little bit of issue. कोई बात नहीं, don't worry. Give us just 2 minutes. I कविता guess. शर्मा को इनवाइट करिए। Yes, sir. On behalf of Center for Women Shri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya, I would like to thank all the speakers who delivered their lecture on the role of Ayurveda in treating lifestyle disorders. And also I would like to thank Honorable Vice Chancellor sir for giving us this opportunity to organize this event. I thank all the committee members and all the heads of the institutes, heads of the department, and all the participants to join the event. Very much thanks to all. Thank you very much, ma'am. National anthem is the heart of every Indian. So I would like you all to stand up and sing the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Okay, thank you very much to everybody. Thank you. Namaskar. Namaskar, sir. Thank you very much.